National Human Rights Commission. So whenever we heard about this National Human Rights Commission, the first word here it is saying talking about something called national, right? So national and there is Human Rights Commission. तो कथा होची या भितर को मते जिया पड़ियो हले ता पूर्वर तार बैकग्राउंड गुडा कोन कोन अछि मु सेगुडा टिके जस्ट टच बेस रे जिबा, राइट? सो जनरली हमें कथा कहउचे कि आम पाखरे ह्यूमन राइट अछि, तो ए जो राइट वर्ड सेटा हमें कोठो आनुचे फंडामेंटल राइट्स, राइट? जोटा काहाटो आसीची बिल ऑफ राइट्स, बिल ऑफ राइट्स काहारो एनिवन सर यूएसए very right. So seta US ro. So basically this human right it is what we called Magna Carta Libertum. तो एटा केबे हितला ना यूएस रे जेतले बिल ऑफ राइट आसिला जोथरे से माने ऐड कले कोन ना दे गेव फंडामेंटल राइट्स, they gave legal rights, they gave matrimonial rights, they gave also conjugal rights, right? So when there was World War II, it brought the concept of human right. तो ता पूर्व हमर कोन सब थिला फंडामेंटल राइट थिला, लीगल राइट्स थिला, matrimonial right, conjugal rights, but there was nothing related to human right. World War II ପରେ concept ଆସିଲା something called human right. So World War II ରେ ଯେତେବେଳେ focus ରେ कोन रहला कि war ହେଲା army versus army, but Hitler told on sere लड़जे Hoffnung, that means I don't care human rights, I don't care. किए कहला Hitler, World War II Hitler told like why I don't care about human rights. So then there was a creation of United Nations organization which is called as successor of League of Nations, जोटा 1919 रहितला बट काम ही बेसी तार किछि करा ही परलानी, जोति पई यूनाइटेड नेशन रहिला, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन रहिला, जे कि हिटलर से कहला ना कि 1935 रु 45 भितर कि भाई मते फरक ही पड़ुनी तमे जहा करतो करा मु ह्यूमन राइट ना रे मु सुनिबी ही नहीं, मु जहा को जेमिति चाहिबी सेमिति मारिबी, राइट? सो टू प्रिवेंट द वर्ल्ड वार इन फ्यूचर नो मोर ह्यूमन राइट वायोलेशंस हैज टू बी देयर. कोन हैला ना वर्ल्ड वार रो कॉन्टेक्स्ट जानले हमें तो वर्ल्ड वार पर जेतले हिटलर कहउछि कि लाइक वर्ल्ड वार टाइम रे कि मते फरक ही पड़ोनी ह्यूमन राइट कांसेप्ट, देन से माने देखले कि ठीक अछि गोटे ताले हमहु गोटे ऑर्गेनाइजेशन बनेया पड़िबो जोटा कि गोटे मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन हबो एंड सेथि रे एटलीस्ट इट हैज टू एंश्योर व्हाट ह्यूमन राइट वायोलेशन न होथिबा दरकार. इज दैट क्लियर? एंड इट टू प्रिवेंट वर्ल्ड वार. एनी डाउट इन दिस? Okay. Now the next concept is United Nations Organization जेतले हला they signed something called Universal Declaration on Human Rights. केबे आसिला सेटा ना 10 डिसेंबर 1948 रे यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1948 रे आसिला जोटा वर्ल्ड वार रो परे आसिला. देन दे हैड ए जनरल असेंबली रिजोल्यूशन जोटा 217 ए सेक्शन में से कोन कहले ना एवरी नेशंस दे एक्सेप्टेड यूनाइटेड डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स. That time it was UDHR, it was not NHRC. Is that clear? UDHR not NHR, NHRC. Now तो तापरे स्टार्ट कोन हला कि जदी समस्त सेठी मानि लेले कि हमको कोन करियार अछि कि यूनाइटेड नेशन जोटा गोटे डिक्लेरेशन आणला कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स तो ताकू बर्तन मते इंप्लीमेंट करियार अछि. तो प्रतिटी नेशन जो माने एक्सेप्ट कले से माने बर्तन चलीबे इंप्लीमेंटेशन ऊपर, राइट? सो इंप्लीमेंटेशन पई से माने कोन कले नेशनल ह्यूमन राइट इंस्टीट्यूशंस बनेले. सो द मोस्ट चांस फॉर वायोलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स बाय द कंसर्न स्टेट ओनली. कथा होजी मैक्सिमम चांसेस रे किए वायोलेशन करबो वर्ल्ड वार रे जेतले हिटलर ही वाज कंसीडर्ड टू बी स्टेट ओनली, हां कि नहीं? हिटलर को मु सेतले कोन कहबी से गोटे स्टेट ही दिला. तो मोस्ट प्रोबेबली लोकंकर राइट्स को वायोलेट किए करथुवा स्टेट वायोलेट करथुवा. ऑलरेडी जदी तमे देखिबो हमर आर्टिकल 13 कोन कहउची जदी गोटे लोकर फंडामेंटल राइट अगेंस्ट किछि जिंस स्टेट करूची देन दैट लॉ जदी स्टेट किछि लॉ तयारी कला जोटा कि गोटे लोकर फंडामेंटल राइट अगेंस्ट होगला दैट लॉ विल बी कंसीडर्ड टू बी null and void. Correct? No, that means most chances रे violation against human right की करिवार अछि ना स्टेट करिवार अछि. Hence all states they promised human right protection. तो जे violation करिया बुझाउछि ना ताकू ही कुआ भाई तू ही प्रोटेक्शन करिया स्टार्ट कर दे, राइट? That means all states required to add certain rules, certain regulations such that they will adhere to universal declaration of rights, because most probably सेही माने ही अछंती जो माने कहिबे कि लाइक आमे ह्यूमन राइट वायोलेशन करिबो. So all the states they prepared their own national human right commission to keep an eye on the state itself not to violate human right, not to violate human right. Such institutions as known as fourth branch institutions. So jodi kali asila ki what is this fourth branch institutions, you should understand that every state they started making like there are different fourth branch institutions, but at least one of the fourth branch institution we are saying it is neither executive nor judicial nor legislative, because polity रे त हम एतिकी तो जानि छै कि
तीनटा पार्ट राइट आइदर एग्जीक्यूटिव जुडिशियल और लेजिस्लेटिव नाउ देयर इज a fourth branch institution which will take care of all these what are the different example of fourth branch institution ना CAG controller auditor general गोटे थर मु गोटे ऑलरेडी CAG विषय इन डिटेल गोटे लेक्चर नेथिली राइट तो जोठी की से डायरेक्ट एग्जीक्यूटिव एक रे तो एग्जीक्यूशन करूची से क्वेश्चन भी पचारि पारुची देन से लॉ मेकिंग रे देखिबो कि कोन अछि कोन प्रॉब्लम अछि तो जो माने ए सब काम करूचंदी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया he will do what SDC supervision direction and control तो ए सब रे obviously executive आसीबो जुडिशियल काम आसीबो लेजिस्लेटिव काम आसीबो तो जो माने ए भलिया काम करछन तांको हमें कोन कहउचे ना फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशंस सो every state they got the responsibility because most probably the state is the one who is going to violate the human rights जेहेतु स्टेट ही भायोलेशन करूची ह्यूमन राइट्स रो करिवार पॉसिबिलिटीज अछि स्टेट को ही दिया गला भाई दायित्व कि भाई तमे ही ह्यूमन राइट कमिशन बनाओ राइट सो every state they created through but punish all the people and watch all of them like executive judicial or legislature but it is very difficult hence a paradox its standards should be high तो कथा होजी कोन कि जदी तमे कहउछ एग्जीक्यूटिव जुडिशियल लेजिस्लेटिव ताकू गोटिए इंस्टीट्यूशन को तमे दोछ दैट मींस दैट इंस्टीट्यूशन टू परफॉर्म परफेक्टली इट हैज टू बी मच मोर हायर नहले जाना पड़ला कि काली गोटे पॉलिटिशियन आसी कहउची एठी अछि हमर ह्यूमन राइट कमिशन कि भाई तमे डिसीजन एमिति नै परिबोनी देन किदु एठी कहउची याकू भी हमें कहिछु कि ये लेजिस्लेटिव दुई काम करबो बट जनरली जदी तमे देखिबो एगुडा हेते हेई जदी तमे कहउछ फोर्थ ब्रांच क्रिएट करबो देन ताक पई गोटे सफिशिएंट हायर स्टैंडर्ड रो गोटे इंस्टीट्यूशन तयारी करो जोथिरे कि तमरो एग्जीक्यूटिव इंटरफेरेंस रहउ नथिबो जोथिरे तमरो जुडिशियल इंटरफेरेंस बेसी रहउ नथिबो एंड लेजिस्लेटिव इंटरफेरेंस रहउ नथिबो बिकॉज़ ए इंस्टीट्यूशन टा ही से तीन टांगर काम करबो बुझी होउची ना बुझी होउनी that's why I am saying this is in governance not in polity because there are gray zones right कि एमिति हमो गोटे किछ गोटे करियार अछि जोथरे कि इंटरफेरेंस बहुत कम रहउतबो particularly from executive particularly from judicial particularly from legislative that's why in Paris principle 1991 regarding the development of standards for national human right institutions तो national human right institution by Paris principle 1948 रे तमे तयारी करदलो अंडर यूनियन यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट देन से माने कहला कि प्रति स्टेट जो नेशन माने या फिर स्टेट माने जो माने एक्सेप्ट करले याकू यूनाइटेड नेशन रो यूडीएचआर को कि भाई तमे तमरो इंस्टीट्यूशन बनबो किंतु से इंस्टीट्यूशन हो गोटे फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन जे कि एग्जीक्यूटिव को भी चेक करियो बिकॉज़ यार काम कोन से माने गोटे जिंस तयारी करछोदी जोटा कि गोटे स्टेट को चेक करियो कि भाई स्टेट तमे वायोलेशन करियोनी बर्तमान स्टेट रे की आसीबो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 हु इज स्टेट ऑल एग्जीक्यूटिव कैन आई से दे आर स्टेट all judicial when they are doing executive role can I say they are also the part of state and all legislative they are also part of state am I right now if all are the state and here you are saying the state to create an institution which will look after the states such that the states don't do any human right violation that means बर्तमान मते को ए institution ए तीन जन के ऊपर थिबा दरकार ना नहीं ट्रू जदि ए तीन जन के ऊपर रहिबो दैट मींस आर स्टैंडर्ड बहुत हाई हवा दरकार सेथि भाई से माने कोन कहले 1991 रे जेतर देखले कि भाई स्टैंडर्ड हाई बनेबार अछि ता पई हमें करिवो कोन ना दे मेंशन कि एस्टैब्लिशमेंट अंडर प्राइमरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन कि भाई तमे आको एग्जीक्यूटिव बॉडी बने परिबोनी कोन बने परिबोनी एग्जीक्यूटिव बॉडी ताको तमे बने परिबोनी ताको तुमको कोउथरे रखिया पड़िबो आइदर कॉन्स्टिट्यूशन रे रख या फिर स्टैट्यूटरी रे जदि रखो तो दैट टू हैज टू हैव ए प्राइमरी लॉ then there has to be a board mandate to protect and promote human rights को promote करिया पई there has to be a board first of all ताको constitutional right दरकार बुझियो ना बुझियोनी कहीं ना जदि constitutional right नहीं आज गोटे गवर्नमेंट आसला फॉर एग्जांपल नीति आयोग is a constitutional body no sir it is executive body correct no तो काली बीजेपी गवर्नमेंट पळेबो जना पड़ला कि बीजेपी गवर्नमेंट तयारी करतला काली गोटे कांग्रेस गवर्नमेंट आसीबो से कहबो नीति आयोग हटाई दियो then नीति आयोग बर्तन तो माने गवर्नमेंट then how नीति आयोग will try to check the legislative बुझियो ना बुझियोनी जदि गोटे लेजिस्लेटिव बॉडी गोटे क्रिएट करिछि गोटे बॉडी को व्हिच इज कॉल्ड एग्जीक्यूटिव बॉडी नीति आयोग देन नीति आयोग कहा अंडर रे काम करबो लेजिस्लेटिव बॉडी अंडर रे काम करबो ट्रू देन से लेजिस्लेटिव बॉडी को चेक केमती करबो बट तमे कहउछ कि गोटे स्टेट को कहउछ से गोटे बॉडी तयारी करबो जोटा कि स्टेट को ही चेक करबो बुझियो ना बुझियोनी स्टेट जदि काली ह्यूमन राइट वायोलेशन कला देन स्टेट को ही चेक करबो दैट मींस तार सफिशिएंटली हाई स्टैंडर्ड हेता दरकार ताकि सेथिरे इंटरफेरेंस
मिनिमल होता दरकार को पर्सपेक्टिव ना फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ स्टेट जोथि बैंक कहला कि भाई मिनिमम ताको तो तमे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दियो या फिर सेथिरे आउ गोटे कोन करो ना गोटे बोर्ड बनाओ जो बोर्ड टा की प्रोटेक्ट करबा और प्रमोट करबा ह्यूमन राइट्स एनी डाउट इन दिस सो यू अंडरस्टूड द बैकग्राउंड राइट ओके नाउ द नेक्स्ट थिंग कि देयर हैज टू बी फॉर्मल एंड फंक्शनल इंडिपेंडेंस कि फॉर्मली भी एटा इंडिपेंडेंस होतबो प्लस फंक्शनली से जो तारा वर्क करिवो सेटा भी इंडिपेंडेंस होता दरकार देयर हैज टू बी प्लुरालिज्म रिप्रेजेंटिंग ऑल एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी कि एमिति न हो कि सेई जो आमे एनएचआरसी तयारी करबो काली जदी गोटे इंस्टीट्यूशन तयारी हला देन सेठी जदी आमे कहबा कि लाइक सेठी जो माने रहिबे एमिति न हो कि खाली आमे जनरल वाला को रखिबो इट हैज टू रिप्रेजेंट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ द सोसाइटी सेठी वुमेन मेंबरशिप थिबो सेठी एससी लोक भी मेंबरशिप थिबे एसटी भी थिबे ट्राइबल थिबे सबु समस्त को से माने रिप्रेजेंट करते ताहाले से माने जानि परबे कि को लोक परिस्थिति कोन को लोक ऊपर वायोलेशन को सिचुएशन रे को भलिया हो जाई पारे adequate resources and finance autonomy भी हितवा दरकार freedom to address any human rights issues annual reporting on national human rights situations cooperation with national as well as international actors right including civil society एमान सहित से माने कोऑपरेशन करबा दरकार so the protection of human right act 1993 आसला because 91 रे कोन हला पेरिस एग्रीमेंट तो पेरिस एग्रीमेंट रे कहला कि भाई स्टैंडर्ड हाई करो सी बर्तमान जदी हम कहबी सीक्वेंस ऑफ इवेंट 1948 कोन तयार हला यूडी यूनाइटेड नेशंस यूडीएचआर नहीं केसला ट्रू यूडीएचआर रे से माने कोन कहले किछि किछि नेशन से माने कहले कि भाई वी आर एग्रीइंग जदी तुम एग्री करूछो देन एग्री कोन करूछो ना तमे गोटे इंस्टीट्यूशन बनेओ हु इज गोइंग टू मेक द इंस्टीट्यूशन द स्टेट हैज टू मेक द इंस्टीट्यूशन सच दैट दैट इंस्टीट्यूशन विल चेक द स्टेट बुझियो जी माने मु काली कहबी कि मु काली गोटे लोक को तयारी करबी जो लोक मते ही कंट्रोल करिवो सिचुएशन बुझी परछो तो सो स्टेट हैज टू मेक समथिंग व्हिच विल ट्राई टू कंट्रोल द स्टेट नॉट टू डू एनी ह्यूमन राइट वायोलेशंस दैट मींस बर्तमान मते को जति स्टेट गोटे जिंस को तयारी करछि जो जिंसटा कि ताकू ही चेक करबो तार प्रोटेक्शन सफिशिएंटली हेवी होबा दरकार ना नहीं सेथे तमे देखो क्याग कोन काहा को चेक करूछि स्टेट को चेक करूछि ट्रू एग्जीक्यूटिव को चेक करिवो एग्जीक्यूटिव एक्शन ओडा को से माने कोठी कोठी खर्च कर तो तार सफिशिएंट प्रोटेक्शन दरकार ना नहीं क्याग ऑफिस को सेम केस रे बर्तमान ह्यूमन राइट कमिशन जो दरकार ताकू ही एमाने कहउछन्ती भाई ताकू प्राइमरीली रख लॉ रे नॉल ताकू कॉन्स्टिट्यूशन रे रख देन तमे जदी कहिलो कि ठीक अछि हमें रखिबु 1991 रे तमे स्टैंडर्ड रेज करे देला देन 19 ऑब्वियसली ताकू बर्तमान तमे कॉन्स्टिट्यूशन केमति पुरेबो आइदर तमे अमेंडमेंट करिवो नहले तमे कि गोटे लॉ नै केसबो तो से माने कोन कहले फर्स्ट गोटे लॉ नै केसले प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 which manifests the Paris principle 1991 रे पेरिस प्रिंसिपल जोटा थिला सेथिरे से माने कोन कहले ना प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ही नहीं आसले नाउ इन दिस प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट दे मेंशन टू थिंग्स वन इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड वन इज स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन इज दैट क्लियर नाउ द क्वेश्चन इज दिस नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन are they going to be the constitutional body or statutory body Sir, constitutional body. statutory body because they created from 1993 act बुझेला ना बुझेला नहीं 1993 एक्ट अनुसार बिकॉज लॉ तयारी हला ना लॉ अनुसार से माने आसले सो सेक्शन 2 ए एक्ट रो सेक्शन 2 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी जो थरे से माने कहले कि ह्यूमन राइट कमीशन जो अछि इट डिफाइंस ह्यूमन राइट्स एज द राइट्स दैट इज रिलेटिंग टू द लाइफ liberty equality dignity of individual guaranteed by the constitution or embodied in the international covenants and enforceable by the court in the India now भाबो इथरे खाली जस्ट ह्यूमन राइट यार जो सेक्शन रहला 2 क्लॉज 1 क्लॉज डी भाबो तमरो फंडामेंटल राइट आउ माने एक्चुअली केतरा राइट पड़ेला फंडामेंटल राइट राइट टू लाइफ आर्टिकल 21 पर्सनल लिबर्टी आर्टिकल 21 इक्वालिटी आर्टिकल 14 dignity article 21 because right to life has choice and dignity correct no so article 21 then international covenants international peace correct article 51 that means से माने जो लॉ तयारी करले से लॉ रे 4-5टा वर्ड लिखि देले जो गुडा कि तमरे काले फंडामेंटल राइट एंड आई अगेंस्ट रे मते तमे कह स्टेट किछि काम करि परिबो देन आर्टिकल 13 अनुसार से कोन हबो नॉल एंड भॉइड हबो ना बने बुझेला ना बुझेला सो अगेन सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स यूडीएचआर केबे तयारी हला यूनाइटेड नेशन यूडीएचआर डिक्लेयर कला केबे 1948 देन तांको कहला कि स्टेट तमे गोटे इंस्टीट्यूशन तयारी करो जोटा कि गोटे फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन हबो जे कि स्टेट को कंट्रोल करिवो नॉट टू गो फॉर एनी ह्यूमन राइट वायोलेशन दैट मींस तारो सफिशिएंटली
हाई प्रोटेक्शन दरकार 1991 पेरिस प्रिंसिपल रे कोन हला डिक्लेयर करा हला कि व्हाट काइंड ऑफ इंस्टीट्यूशनल बॉडी इट वुड बी तो आइदर यू पुट इट एज ए प्राइमरी लॉ दैट मींस गोटे स्टैट्यूटरी बॉडी करो या फिर तमे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन दियो एंड जदी तमे स्टैट्यूटरी बॉडी करूचो करेक्ट लॉ नहीं कि आसी कि स्टैट्यूटरी बॉडी तैयारी करूचो दैट मींस ताकू प्रॉपर्ली प्रोटेक्ट करा जाओ राइट तो जदी तमे देखिबो NHRC व्हिच इज नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन it is an embodiment of India's concern for the protection for the promotion as well as the protection of human right any doubt human right कोठु आसिला ना वर्ल्ड वार परर कांसेप्ट रु आसिला यूनाइटेड नेशन सहित लिंक अछि UDHR सहित लिंक अछि पेरिस प्रिंसिपल सहित लिंक अछि एंड गोटे एक्ट आसिला ताकि एन्श्योर करिया पई कि नेशनल लेवल रे नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन स्टेट लेवल रे स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन एनी डाउट So the Constitution of National Human Rights Commission or State Human Rights Commission and Human Rights Courts for better protection of human rights and for the matter connected therewith incidental thereto. So this is what the Act says, right? So Act कौन कहूची ना Protection of Human Rights Act 1993 एथिरे ये डिफाइन करिची right to life, right to liberty, equality, dignity and international commitment. एतिकी मने रहइबो ठीक अछि जदी काली प्रीलिम रे किछि भी लिंक आसिला कि दिस प्रोटेक्शन ऑफ सी जदी तमे PYQ देखियो ना पूर्व थरा भी से माने क्वेश्चन लिंक करि चली करेक्ट कि आर्टिकल सहित लिंक करू चंदी सो जदी क्वेश्चन किछि भी आसिला रिलेटेड टू दिस ह्यूमन राइट कमिशन जो तयारी हला द फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द प्रीलिम्स विल बी whether it is statutory body national human right commission or constitutional body or executive body or quasi judicial body what will be the answer statutory body why statutory body because after 1991 जो थरे कि पेरिस रे कहला कि आ पय गोटे तमे सफिशिएंटली गोटे हायर स्टेटस दियो एंड स्टेटस तमे कोथरे दबा आइदर ताको प्राइमरीली लॉ रे तयारी करो या फिर ताको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दियो am I right so the constitutional status जदी दबो देन तुमको अमेंडमेंट दरकार बट सेन कहले ठीक अछि हम अमेंडमेंट काहे जिवो हम गोटे काम करियो लॉ तयारी करनो तो लॉ तयारी करने लॉ होची कोन ना प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट तो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट जोटा कि तुमको नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन तयारी कला स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन तयारी कला एंड ह्यूमन राइट रो कोर्ट्स भी तयारी कला कोन करिया पई टू एन्श्योर promote and protection of human right is that clear okay then आरो जदी तमे देखिबो बर्तन तारो केते जण मेंबर रो चले 1 5 7 तो जणे रहउची चेयरपर्सन जे कि गोटे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हितबो या फिर जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट हितबो he is going to be the chairperson members there will be the member there will be 5 member right one member will be from the judge of the supreme court one member will be the chief justice of high court and 3 members one shall be women because we know कि जो 1991 रो आसिला कि it has to have representation of all aspects of the society am I right हंगी नै नहल तमे केमिति एन्श्योर करियो कि भाई ह्यूमन राइट प्रॉपर्ली होची बोले सेति भाई हम कहले कि जो 5 जण मेंबर फर्स्ट तो चेयरमैन जे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सेकंड जो आ 5 जण रहले से 5 जण रु फर्स्ट जण होची सुप्रीम कोर्ट रो जज सेकंड जण होची हाई कोर्ट रो चीफ जस्टिस थर्ड आ जो 3 जण रहले one shall be women appointed from amongst the person having knowledge of practical experience in the matter relating to the human rights then another 7 they are called deemed member they are not actually member of NHRC okay they are not actually member of NHRC but they are supposed to be deemed member so who are those na chairperson of NCBC national commission for minority ro chairperson national commission for protection of child right ro chairperson NCSC, NCST, then for women and chief commission for the person with disability. Now you tell me, ये जो 7 जन रहले ए माने कवर कले पेरिस प्रिंसिपल रो जो कांसेप्ट तमर थला बुझियला ना बुझियला नहीं okay fine now coming to the next now appointment किए करे तो जो चेयरपर्सन आउ जो मेंबर आमे बर्तन देखिबा टोटल केते हला ना 1 5 7 1 + 5 जोटा 6 हबा कथा सेटा हि जाउची 7 करेक्ट नो 1 होची चेयरमैन 5 होची 1 1 3 तो 1 जणे होची सुप्रीम कोर्ट रो जज जणे होची चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट एंड 3 डीम्ड मेंबर सॉरी 3 मेंबर्स जो थरे कि गोटे मैन सॉरी वुमेन हेजबा निहाती दरकार आउ तार से जो 3 जण से मानकर नॉलेज थिबा दरकार रिलेटेड टू ह्यूमन राइट्स राइट आउ 7 जण होचंदी डीम्ड मेंबर दिस इज क्लियर now these 1 and 5 who are considered to be the member of National Human Rights Commission they have to be appointed by the president by warrant under his hand and seal
under recommendations. That means they will be under recommendation only. एमिति न कि प्रेसिडेंट को पाखरे पावर अछि कि से जाहा को चाहे ताऊ कर देबे गोटे रिकमेंडेशन हो रिकमेंडेशन कोन ना गोटे कमिटी हो जो कमिटी रे की प्राइम मिनिस्टर थिबो स्पीकर ऑफ लोकसभा मिनिस्टर ऑफ इन चार्ज ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा लीडर ऑफ अपोजिशन इन राज्यसभा लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा बर्तमान तुम मते को ए समस्त को जदि तुम देखिबो एमान होचदी लोक प्रतिनिधि ट्रू Yes, sir. we are not saying chairman here right not chairman of Rajya Sabha but if you say deputy chairman he is elected am I right chairman is not elected like directly but deputy chairman see Rajya Sabha chairman vice president जे होती ताको direct तमे करे दिया chairman but deputy chairman is elected am I right leader of opposition he is directly elected by the people leader of opposition of the largest party in Lok Sabha leader of opposition of the largest party in the Rajya Sabha ministry of home affair minister in charge then speaker of Lok Sabha and prime minister एमाने होचंदी गोटे कमिटी तयारी करिवे एमाने जहा को कहिवे कि ये हबो मेंबर तो से माने हिजवे चेयरपर्सन प्रेसिडेंट बाछिबे प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर देबे तांको कि यू अपॉइंट करिवे नॉमिनेट तो करिवे प्रेसिडेंट अपॉइंट करिवे कि भाई यू आर गोइंग टू बिकम द चेयरपर्सन राइट एंड यू आर गोइंग टू बिकम लाइक चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस या फिर जज जने हिजवा दरकार चीफ सुप्रीम कोर्ट जी हिजवा चेयरपर्सन आ बाकी जो मेंबर एथिरे तो जने सुप्रीम कोर्ट जज जने हाई कोर्ट चीफ जस्टिस आउ तीन जण मेंबर एमानन को बाछिया पई दरकार गोटे कमिटी कमिटी रे के अछंदी प्राइम मिनिस्टर अछंदी जदि मु कहबी कि बीजेपी पटरु को माने रहबे निजर प्राइम मिनिस्टर स्पीकर भी तांकर देन लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा सेटा तो ओपोनेंट को पड़ेला राइट मिनिस्ट्री इन चार्ज होम अफेयर ए तीन जण तो बीजेपी पटु पक्का राइट डेप्यूटी चेयरमैन मोस्ट प्रोबेबली बीजेपी जे रूलिंग पार्टी थी राइट मोस्ट प्रोबेबली देन लीडर ऑफ अपोजिशन you cannot say right you cannot say this because एमिति न कि बीजेपी रो संख्या गरिष्ठता अछि कोठी राज्य सभा रे so आउ के भी ही पारे डेप्यूटी चेयरमैन because it is elected right so you may not able to say 100% that deputy chairman will be supported by बीजेपी only like बीजेपी सपोर्ट करी कि तांको जितै थियो एमिति तो हेइ नथलो अलग भी कि पारे लीडर ऑफ अपोजिशन को भी दीटा चांस दे राज्य सभा प्लस लोकसभा एति कि मन रहइबो जदि काली प्रीलिम रे आसिला कि एनसीएससी सॉरी नॉट एनएचआरसी नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन कि तांकर केते जण मेंबर हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर 1 plus 5 7 are called to be deemed member they are not the actual member of NHRC they are the deemed members is that clear because 1991 रे अछि कि aspect of society all the aspect of the society को ସେମାନେ फुलफिल करथि दरकार से जोथि कि हम NCSC रो चेयरमैन NCST रो चेयरमैन NCBC रो चेयरमैन वुमेन माइनॉरिटीज मानकर चेयरमैन चाइल्ड राइट्स मान चाइल्ड प्रोटेक्शन वाला तांकर चेयरमैन डिसेबिलिटी जो मान अछंती ताहि से मानकर चेयरमैन ए माने समझ दे आछबे बुझियला ना बुझियला नै हबय कि ओके देन Yes. जदि माने रेजिग्नेशन देबे रेजिग्नेशन काहा को देबे ना नोटिस इन राइटिंग अंडर हिज हैंड एड्रेस टू द प्रेसिडेंट जे तांको अपॉइंटमेंट देजन तांको देबे जदि इन केस तांको रिमूवल करियर दियो प्रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट आज सेम आज सीबीसी रो चेयरमैन को जेमिति रिमूव करा हुए सेही बढिया एमान को भी रिमूव करा जिवो प्रेसिडेंट ऑन बिहाफ ऑफ सुप्रीम कोर्ट राइट सुप्रीम कोर्ट रे तांको विषय रे चलिबो कि भाई जस्ट टू प्रूव कि वेदर ही इज आउट ऑफ माइंड सेंस काम करूनी कॉन्स्टिट्यूशन को फॉलो ही करूना दी ए सब दिन जदी सुप्रीम कोर्ट फाइंड कला कि ओके दिस इज लीगल कि से लोक माने ए भले ही अछथि देन रिकमेंडेशन जो प्रेसिडेंट को एंड देन प्रेसिडेंट कैन रिमूव टेन्योर 3 years or 70 years whichever is the earlier that is the tenure earlier it was 5 years but it was amended in 2019 earlier member केते थिले ना 1 plus 4 for 7 but later member केते हेले 1 plus 5 plus 7 are called the deemed members is that clear आगुरु केते थिला ना 5 वर्ष थिला बट वर्तमान टेन्योर केते ही जाईची 3 वर्ष नो पोस्ट रिटायरमेंट एम्प्लॉयमेंट power is as same as CBC or local maybe sometime else I will take CBC local because I don't want to go there because see this topic I am covering because I have to go to economics जो इकोनॉमिक्स के मते वीकर सेक्शन विषय कहियार अछि तो वीकर सेक्शन विषय मु सेति कोले बुझी पारि जे एटलीस्ट ह्यूमन राइट रो गोटे कंपोनेंट तमे क्लियर थिबो कि भाई काली जेतले मु एनसीएससी कथा कहबी ता ऊपर मु जेतले अत्याचार कहबी देन हठात ताकू तमे कमेंट कनेक्ट कर पारतो कि भाई ह्यूमन राइट रो वायोलेशन हो बुझियो कि ना बुझियो नि okay so before going to NCSC before going to NCST or NCBC I have to cover human rights because this has also linked to NCBC say article 338 सहित भी लिंक होगा करेक्ट नो काली तांको सहित जदी अत्याचार हैला अगेन ह्यूमन राइट वायोलेशन हो काहे की वायोलेशन हला बिकॉज़ प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट सेथिरे हमें कोन कोन वर्ड लिखिथिले लाइफ लिखिथिले लिबर्टी लिखिथिले
देन डिग्निटी लिखिथिले, इक्वालिटी लिखिथिले एंड इंटरनेशनल कन्वेनेंस, राइट? इंटरनेशनल कन्वेनेंस। बर्तमान मते को एई चारिटा ताली जो जो लोक ऊपर भायोलेशन हो एटलीस्ट तार तो एई चारिटा ऊपर भायोलेशन हो ना, आइदर ताको इक्वालिटी मिलिलानी, आइदर तार गोटे चॉइस थिला, तार गोटे डिग्निटी थिला, ताकू रोकी दवा पई ट्राई कराला, हो कि नहीं? तो एनसीएससी, एनसीएसटी, एनसीबीसी एगुडा तो ई पर्सपेक्टिव रो ही चलिबो। बुझियला ना बुझियला नहीं? फाइन, ओके, चलो। सो कंपेंसेशन कौन ना, मेनी टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट्स वायोलेशंस आर देयर। एग्जांपल कस्टोडियल टॉर्चर, एनकाउंटर, थर्ड डिग्री टॉर्चर, फॉल्स केस, इलीगल कस्टडी, मालाफाइड। सेंट्रल गवर्नमेंट कौन करछि ना, ए जदी ई भले सब केस हैला, डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ केसेस, इट विल गो टू आइदर नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन। सो द recommended states they can also tell it to, for example जदी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन को गला, जदी स्टेट चाहिबो से माने कोन कर परिबे, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंड करी कि लाइक एनएचआरसी को जणे दे परिबे, ठीक अछि। एंड दे हैव टू पे compensation. Who will get the compensation? State has to give the compensation because तमे को ना ए जो ह्यूमन राइट कमीशन एटा काहा को रोकिया पई हेछि, मोस्ट प्रोबब्ली स्टेट माने ही किछि ना किछि करिवे। कस्टोडियल टॉर्चर, कस्टडी रे गोटे लोक अछि ताको टॉर्चर करूछि, के टॉर्चर करियो? पुलिस ही करिवो ना। तो पुलिस स्टेट ना स्टेट नो, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 12 पुलिस इज स्टेट। एनकाउंटर हला की एनकाउंटर करिवो, एठी मर्डर लेखाइ नि, एनकाउंटर लेखाइ छै। थर्ड डिग्री टॉर्चर किए करिवो? पुलिस करिवो। फॉल्स केस गोटे लोक को मिछुटारे ता नारे धारा 500 टा लगेई ताको अरेस्ट कर देछो, देन ह्यूमन राइट वायोलेशन। इलीगल कस्टडी, काहा गोटे हठात किना उठे देतो, किछि फॉलो करिनो, जहा जहा तमर प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ रे किछि फॉलो होइनी ताको उठे देतो। मालाफाइड किछि मन इच्छा किछि गोटे केस बेस तानारे पके कि चोरी डकायती ता घरे तमे ड्रग्स वगैरह लगे कि देन ताको कहते ताको उठे दबो आमे। सो ए सबु हेले कंपेंसेशन के दबो, कंपेंसेशन हैज टू बी बेयर बाय द स्टेट। सो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 अनुसार द कंपेंसेशन ओनली एट द एंड ऑफ प्रोसीडिंग्स, दैट मींस प्रोसीडिंग सरिला पर ही कंपेंसेशन। दैट मींस ए मझिरे जो प्रॉब्लम रे फसी जाइछि से लोक ता पई तमे कोन करथिलो, काली हठात ना मु किछि करिनी, मते आसी कि पुलिस उठे नेला, देन केस चलला एंड केस एते लंबा चलिला कि 3 वर्ष पळेला, किंतु 3 वर्ष भीतर मोर जो ह्यूमन राइट रो वायोलेशन हैला ता पई तो कोनोसी कंपेंसेशन नथला, जोथ में कि 2006 रे अमेंडमेंट हैला एई ऊपर कि भाई गिव इमीडिएट इंटरिम रिलीफ। फास्ट तो इंटरिम रिलीफ इमीडिएटली दियो, 50,000 रो इंटरिम कंपेंसेशन दियो। एमिति न कि प्रोसीडिंग सरी वाला पर तमे दबो कंपेंसेशन। बुझियला ना बुझियला नहीं? ठीक अछि। एठी जो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट 1993 रे जेतले कुहाला सेतले कुआइतला कि एट द एंड ऑफ प्रोसीडिंग सरिला परे जदि स्टेट फाउंड हैला गिल्टी ताले सीए कंपेंसेशन दबो, किंतु वर्तमान 2006 रा अमेंडमेंट रे कोन कि जदि लागिला कि ह्यूमन राइट कमीशन को लागिला जदि स्टेट एथिरे गिल्टी होबार अछि, फॉरगेट अबाउट एंड, गिव एटलीस्ट इंटरिम कंपेंसेशन कि मझिरे केस चलितला भितरे ही तमे कंपेंसेशन दबो। केते दबो ना 50,000। नाउ एनएचआरसी रो पावर जदि देखिबो, दे कैन टेक सुओ मोटो, मींस दे कैन टेक इट्स ओन मोशन। जोटी तांको लागिला एमिति न पुलिस स्टेशन जदि तम घर भितरे गंडगोल होला, पुलिस आसी कि तम गंडगोल टा सॉल्व करबो कि करबोनी, जे पर तमे जाई कि पहुंची न गोटे एफआईआर दबे। ट्रू, अनलेस अंटिल इट इज हैम्परिंग द पब्लिक एट लार्ज। तम घर भितरे गंडगोल होला, भाई भाई भितरे गंडगोल होला, पब्लिक रे होना, देन पुलिस आसीबो कि सेठी पब्लिक रो इंटरेस्ट मैटर ही करूनी। ट्रू, ता माने तमे जेतले जाई केस करबो देन पुलिस डिसीजन नबो, राइट? तो ताको कॉग्निजेंस भी कहंदे, ठीक अछि, पुलिस केस रे। बट एठी हमें कोन कहजे सुओ मोटो, की सुओ मोटो नै परबो कि हठात जो गोटे लोक ऊपर वायोलेशन होउची, तार ह्यूमन राइट रो वायोलेशन होउची, हठात से लोक आसी पहुंच पाउनी, स्टिल ह्यूमन राइट कमीशन से सुओ मोटो नै परबो, से लोक को कंप्लेन करिया दरकार नै, डायरेक्ट से माने स्टार्ट कर देबे। विजिट टू एनी काइंड ऑफ जेल और कस्टडी दैट कैन हैव द पावर ऑफ एनएचआरसी, ensuring article 21 because this is related to what, life and liberty, जोटा कि प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट 1993 रे मु डायरेक्ट कहली कि ए वर्ड वाला अछि। तो काली जदी आई वोंट बी सरप्राइज्ड इफ देयर विल बी a question related to protection of human right act which is in 1993. It talks about article 18, article 17, article 21, article 24. Then which will be the perfect answer? I told article 17, 18, 21, 24. 21 article. The maximum chance it will be go for 21. Am I right? Straight forward से section 2 रे अछि ना, section 2 रे डायरेक्ट लाइफ एंड लिबर्टी कथा ही लिखा है। जदि 14 आस्तांदा देन आई विल आल्सो आंसर फॉर 14 आल्सो, कि इक्वालिटी ऊपर अछि। 51 जदि लिखा था आई विल गो फॉर 51 आल्सो,
बिकॉज इंटरनेशनल पीस वाला कथा को इंटरनेशनल कन्वेंट जोटा कि आमे ऑलरेडी मानी कि भाई यूडीएचआर जेतले से कहला स्टेट्स माने राजी थिले कि भाई आमे ताको इंप्लीमेंट करिवु दैट मींस इंटरनल कन्वेंट रे जदी तमे रेडी हे जाओ पेरिस प्रिंसिपल रे जदी तमे रेडी हे जाओ देन तुमको मानिवार अछि जेटा 51 जोटा कि हमर आर्टिकल रे अछि डीपीएसपी हां कि नहीं ओके देन बट 51 इज नॉट मैंडेटरी करेक्ट इट इज नॉट मैंडेटरी से हमें ताको 51 रे रखि ताको हमें फंडामेंटल राइट रखि नहले काली जदी को आइदा कि समस्त राज्य जदी भाई तुम ऊपर प्रेशर लगाओ तमे भी राज्य हो फंडामेंटल राइट केली कि तमे एगेंस्ट रे पळेबो तो काली जदी 51 रे 51 डीपीएसपी रे अछि ना यू ऑलरेडी नो कि डीपीएसपी आर नॉट सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू राइट कि जदी गोटे जुडिशियल रिव्यू तो सब किछि सब्जेक्टेड टू जुडिशियल रिव्यू एमिति नो कि काली जदी गोटे स्टेट फॉलो न कला ताहले तमे जाई कि जुडिशियल रे कहबो कि से स्टेट काहे की करूनी से जिंस सुनावन जदी स्टेट करि देला देन सेथिरे जदी तमर किछि प्रॉब्लम आछि ताहले तमे जुडिशियल रिव्यू करो इज दैट क्लियर Yes, sir. okay next interference in judicial proceeding involving in violation of human rights जदि काली कोठी भी गोटे जुडिशियल प्रोसीडिंग होची से टाइम रे ह्यूमन राइट कमिशन इंटरफेरेंस करि परिबो जुडिशियल प्रोसीडिंग रे जदि सेठी ह्यूमन राइट वायोलेशन हितबा दैट मींस इट आल्सो शोज फोर्थ ऑर्डर इंस्टीट्यूशंस बिकॉज़ फोर्थ ऑर्डर इंस्टीट्यूशन मींस दे हैव टू चेक एग्जीक्यूटिव दे हैव टू चेक लेजिस्लेटिव दे हैव टू चेक जुडिशियल्स आल्सो तो जेतले जुडिशियल स्टेट केतले आसीबो जेतले माने एग्जीक्यूटिव काम करछन्ती बट एठी से माने तो जुडिशियल डिसीजन नउछन्ती से टाइम रे माने स्टेट नो बट स्टिल इट विल आल्सो मैंडेट कि आ पाखरे जुडिशियल पावर भी अछि तो से जुडिशियल प्रोसीडिंग रे भी पार्टिसिपेट करि परिबो इंटरफेरेंस करि परिबो इट हैज आल्सो द पावर ऑफ सिविल कोर्ट टू ग्रांट इंटरिम रिलीफ बिकॉज़ ये जो 50000 सिविल कोर्ट रो काम कोन सी देयर आर टू काइंड ऑफ offenses basically one is called compoundable one is called non compoundable maybe in future mu tamu kahibi related to lok adalat right lok adalat then we will talk about something called mediation arbitrations right conciliations so sethire ase ki something called compoundable and something called not compoundable right so what is compoundable means the cases which are going to be compromised तो compromise केतला को case see I again I am saying I won't be surprised if these words will come in prelims right so compoundable means I am saying the case which is going to be compromised मो जागा जने नै जाईछि आमे होना कटा हेनु मो जागा जने नै आइछि एटा compromise सिविल केस रे हबो हां most probably all the civil cases where there is a penalty वाला condition right जो थरे किछि पैसा पत्र देकी सेटलमेंट हे परबो those are considered to be compoundable cases but murder case rape case divorce case ये सब होती नॉन कंपाउंडेबल केस तो एथिरे कंप्रोमाइज हे परबोनी सी डिवोर्स इज नॉट कंप्रोमाइज मेंटेनेंस इज कंप्रोमाइजेबल बुझियला ना बुझियला नि कंपाउंडेबल तो लोक अदालत रे तमे जाई कि पके दे परिबो कि मेंटेनेंस रिलेटेड बट डिवोर्स रिलेटेड लोक अदालत रो डिसीजन सेटा मे बी एटा परे बेटर डिसीजन करे बट दिस इज व्हाट वी कॉल्ड पावर ऑफ सिविल कोर्ट दैट मींस एठी कंपाउंडेबल केसेस गोडा आसी जीवो कि कंपाउंडेबल केसेस रे जोठी कि इंटरिम रिलीफ दबार अछि संगे संगे ताको दियो स्टेट एटी मर्डर कर दो करेक्ट नो जदी एनकाउंटर करची स्टिल सेठी जुडिशियल प्रोसीडिंग हबो जोटा कि गोटे एनएचआरसी रो पावर फास्ट कथा होची जदी अत्याचार होईची करेक्ट नो जोटा हमें कहले कस्टोडियल टॉर्चर हैला या फिर इलीगल कस्टडी इलीगल ताको उठै नै हैला इलीगल अरेस्ट वगैरह हैला सेठी ताको संगे संगे इंटरिम कंपेंसेशन दियो जोटा कि पावर ऑफ सिविल कोर्ट देन दे हैव टू प्रोवाइड द एनुअल रिपोर्ट टू हुम टू प्रेसिडेंट को से माने एनुअल रिपोर्ट सबमिट करिवे बिकॉज़ अपॉइंटमेंट कहा द्वारा होची प्रेसिडेंट तो देखो कैग भी से यही करे कैग को अपॉइंट किए दबो प्रेसिडेंट सबमिट कहा को करिवो प्रेसिडेंट को राइट सो दे कैन गिव एडवाइस और रिकमेंडेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट दिस इज द इशू बिकॉज़ दिस इज द इशू दैट्स व्हाई इट इज इन गवर्नेंस मींस ग्रे area means issue what it says it can give many advice and recommendation not directions what I am saying it will give advice it will give recommendation not directions directions are mandatory advice or recommendation are not mandatory is that clear that means Yes. how will you ensure that this is a fourth order institution you already protected because Paris principle अनुसार तमे protected ताकू कला कि भाई आइदर ताकू constitutional status दियो या फिर ताकू primarily law रे तयारी करो तो तमे primarily law रे तयारी कर देला प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट नै केसला 1993 रे जोथरे तमे स्टैट्यूटरी बने देला दैट्स फाइन बट हियर यू आर जस्ट मेंशनिंग एडवाइस और रिकमेंडेशन तमे केवल गवर्नमेंट को सेंट्रल गवर्नमेंट दियो ताकू तमे एडवाइस दबो दैट्स व्हाई इन न्यूज़पेपर यू विल फाइंड दैट article 21 life is not merely
breathing but choice and dignity. So it is a umbrella article, jota article 21 ame कहूचे. Giving Human Right Commission more teeth. Why it is called toothless tiger? This toothless tiger is because of this. बर्तमान मते कुआ जदि काली गोटे आसी वाला article related, I am saying from the perspective of mains, कि why this National Human Right Commission or State Human Right Commission is considered to be toothless tiger. You have to justify from UDHR to Paris Principle that for institutions till here, and this has to be the closing line. It is advisory or recommendatory bodies. It is not giving direction to the central government. बुझिएला ना बुझिएला, right? So न्यूज रे कोन आसीबो, गिविंग ह्यूमन राइट कमिशन मोर टीथ, ताको अपनी पावर दियो ताकि से डायरेक्शन दबा स्टार्ट करो, नॉट कि जस्ट खाली एडवाइजरी, बिकॉज़ नाउ एनएचआरसी प्राइमरली बिहेव्स एज एडवाइजरी बॉडी, नॉट डायरेक्शन वाला बॉडी. फॉर एग्जांपल ईसीआई, इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया, कोन आमे लिखुजे एसडीसी, डायरेक्शन कि भाई जहाँ को मुझे जेमिति डायरेक्शन देबी से सेमिति करियो, नॉट रिकमेंडेशन. मु एमिति रिकमेंड देबिनी कि भाई तमे आसे कि गोटे मु कहू कि स्टेट को रिकमेंड करूची गोटे तमे काम कर, जति टीचर अछंती तांको गोटे काम कर, तांको मते दियो डेपुटेशन में. It is not recommendation, it is direction. I am giving the directions, you have to do it. बुझियो ना बुझियो ने difference between direction and recommendation. Okay, fine, this part is done. So there was a case related to Hadia case, right? So right to faith, right to marry. So right to faith, right to marry coming under article 21. Liberty, can she go to NHRC also? Yes, she can go to NHRC. बुझेला ना बुझेला नहीं. Hadia case I already covered previously, right? तो जो थे हमें कहले कि तांको मैरिज करनी आइतला, गोटे मुस्लिम सहित मैरिज करथले, देन देयर वाज केरला कोर्ट हु वाज इन्वॉल्वड, देन केरला कोर्ट रो जो डिसीजन दिला ताकू बाईपास कराला, कोठी बाईपास कनो ओवररूल कराला सुप्रीम कोर्ट रो डिसीजन, एंड से माने केरला हाई कोर्ट को भी गाड़ी पड़ीला, राइट? सो एनएचआरसी फ्लैग्स पॉल्यूशन इफेक्ट्स ऑन ह्यूमन राइट. जोठी की ह्यूमन ऊपर टॉर्चर होला भलिया लागिवो एंड स्टेट सठी काम करूनी, स्टेट द्वारा स्टेट करिनी बोली, आइदर स्टेट करिछि या फिर स्टेट करिनी बोली, ताहाले भी ह्यूमन टॉर्चर होउछि, ताहाले भी सेठी एनएचआरसी अंडर रे पळेबो. सो इफ पर्सन हैड बोथ चॉइस टू मूव टू कोर्ट एंड एनएचआरसी, व्हिच इज बेटर? कोर्ट इज बेटर. NHRC is just advisory only. But can he or she go to NHRC? Yes, they can go to NHRC. But which is better? काली जदि तमर किछि ओटे इशू आइला, देन तमे कोर्ट कि जिबा दरकार. NHRC को जिबो ना तमे कोर्ट को जिबो? Better you should go to court, because the Supreme Court or High Court, they will issue read jurisdiction. कहा को? State को. हंगे नहीं कि state have to do this. मांडा बॉस लगे दो भाई, तमे केमिति काम करबो? That is, this is what we call extraordinary power. This read jurisdiction is extraordinary power. It is just not only ordinary power कि state को बर्तन तमे चेक भी कर दो. That means now at this read jurisdiction you are above the state. बुझियो ना बुझियो ना. आर्टिकल 13 अंडर रे जतल तमे कहू कि भाई स्टेट अंडर को तमे चेक कर दो. आर्टिकल 32 रे तमे जतल कहू जुडिशियल रेमेडी, से जुडिशियल रेमेडी रे जतल जुडिशियल रिव्यू करबो, सेथरे तो तमे रीड जुरिस्डिक्शन दोछो ना. कहा को दोछो तमे? सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट. बुझियो ना बुझियो ना, राइट? ओके. सो स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन सेम एज नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन ओनली. तो जदि तमे देखियो एथरे कोन हो ना, रेस्ट्रिक्शन इन सेंट्रल लिस्ट, से माने एमिति सेंट्रल लिस्ट रे जो ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट ओडा थिबो सेथरे से माने सब्जेक्ट रे से माने किछि करि परिबेनी, से माने केवल रेस्ट्रिक्शन सेठी लागि जिवो. ओनली दे विल थिंक अबाउट स्टेट लिस्ट आउ कॉन्करेंट लिस्ट रे जो ऑब्जेक्ट ओडा अछि ता ऊपर से माने किछि करबे. दिस इज ड्यू टू द फेडरलिज्म. accreditation to maintain the standard according to the Paris principle. ना स्टेटस मिलियो कोन जदि से माने फुल्ली कंप्लायंट अछन पेरिस प्रिंसिपल सहित, बिकॉज़ आमे देखिले ना पेरिस प्रिंसिपल रे बहुत सारा थिला 7-8टा पॉइंट थिला. जदि 7-8टा को पॉइंट रे फुलफिल करूचंदी, देन दे आर फुल्ली कंप्लायंट, द स्टेटस विल बी A, or else partly compliant, status will be B, or if they are not compliant, then status will be no status. Then there are subcommittee on accreditation to give accreditation. These are not required. Global Alliance of National Human Rights Institutions, that is what called Canary, right? Then Citizen Amendment Act 2019 रे आसिला. Many country questioned on India for violation of human rights. NHRI of India will represent only if it has accreditation. तो इंडिया रो NHRI सेतिकी बेले से माने रिप्रेजेंट करबे जदी तांको accreditation मिलिथो, स्टेटस A स्टेटस मिलिथो. किंतु हमको जदी कहबो हमर किछिटा पोर्शन अछि पेरिस रो जोटा कि हमें फॉलो ही करू. सो वे फॉरवर्ड कोन ना, इंक्रीज इंस्टीट्यूशनल रिसोर्सेस, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रो स्टेटस दियासो. बर्तन प्रेजेंटली हमें कोन अछि NHRI? स्टैट्यूटरी बॉडी.
कौन सी लॉ तुमको मिलबनी कॉन्स्टिट्यूशन कौन सी आर्टिकल उठे कहि दियो ना कि जो एनएचआरसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मिलथिबो कौन सी आर्टिकल ही नहीं अछि किछि आर्टिकल No, sir. ओके एनी डाउट एनएचआरसी फाइन राइट सो काली जदि एनएचआरसी रो कौन सी भी क्वेश्चन आसला तो क्वेश्चन मैक्सिमम कोथुर आसीबो कि एनएचआरसी को से माने पेरिस सहित लिंक करिवे एनएचआरसी को से माने यूनाइटेड नेशन सहित लिंक करिवे एनएचआरसी को से माने आर्टिकल सहित लिंक करिवे जोथरे मु तुमको कहले आर्टिकल कोन कोन 14 21 51 फाइन आउ एनएचआरसी को से माने कोन लिंक करिवे ना सेथिरे से माने कहि परिवे कि मेंबरशिप वाला कि मेंबर किए से मेंबर रो जो ताकर अपॉइंटमेंट किए करूची कमिटी रे को माने रहि परिवे को माने रहि परिवेनी से भीतर पीआईक्यू बनि जाई पारे या फिर आउ पॉलिटिव पर्सपेक्टिव कोन बनिबो कि चेयरमैन जे तार टेन्यूर कोन तार रिमूवल प्रोसेस कोन या फिर तांकर पावर कोन एति की तो कथा एनी डाउट fine right so our next concept is related to NCSC NCST NCBC okay this is also very important so I am quoting one Ambedkar's thought process so ours is the struggle for not the money but for the power and sorry ours is the struggle for not money and power amara money and power by struggle nahi for the reclamation of human dignity article 21 कि आमर जो स्ट्रगल होची सी कहीं केटा आसिला ए वर्ड टा ना आगु का आसीबो रिजर्वेशन देन सेटी तमे कहबा भाई रिलेटेड टू मनी करेक्ट सो आवर स्ट्रगल इज नॉट फॉर मनी और पावर आवर स्ट्रगल इज फॉर रिक्लेमेशन ऑफ ह्यूमन डिग्निटी जो जिंस गोडा सेमानक सहित अनजस्ट हेची कि सोसाइटी रे सेमानक सहित अनजस्ट हेची छुआ अथवा भेदभाव हेची ताकू हटेबा पई दैट इज आवर स्ट्रगल सो दिस इज नॉट माय वर्ड्स दिस इज अंबेडकर कर वर्ड ठीक अछि तो कॉन्स्टिट्यूशन रे जेतले कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली हैला डिस्कशन ऑन हिस्टोरिकल रॉन्ग सी जदि हिस्टोरिकल रॉन्ग हे न ताला देयर इज नो वर्ड रिलेटेड टू एनसीएससी एनसीएसटी एनसीबीसी समस्त इक्वल थांदे बट देयर वाज हिस्टोरिकल रॉन्ग बाय आवर ओन सोसाइटी through caste system which is related to untouchability which is related to discrimination बुझियो ना बुझियो so untouchability in the basis of what social economical and political बुझियो ना because our own people I told no caste system रे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र now this शूद्र they started segregating further कि शूद्रଙ୍କ भितर से माने देखिले कि किए काहा को हमें खराब कि गोटे माने भलो काम करूनी रिलीजन बेसिस रे माने कहले कि भाई एटा रिलीजन रे मना करा होची देन तमे ए काम करछो देन तमे आमटू आहुरी तळे तो एठी ही ग्रुपिज्म स्टार्ट हे गला किछि ग्रुप रहले कि भाई आमे तमडू ऊपर आ किछि ग्रुप रहले तमे आमटू तळे तो एमानन को ना जॉब रे अपॉर्चुनिटी मिलेला ना एमाने गोटे सोसाइटी रे प्रॉपर्ली जोठी पूरा सब गांर लोक जोठी बसी परिबे सेठी माने बसी परिबेनी पाठरे असुविधा को सेक्टर नाही जोथरे असुविधा लाने तो सब सेक्टर देखियो तांको सोशली से माने असुविधा रे पडिले मंदिर को से माने पुरै दै जायबोनी गां जदि थिबो गां रो मेन कोर ऑफ द हार्ट रे जोठी सब बड़ बड़ माने सब लोक माने रहउतबे सेठी न रहि कि तांको दिया हो कि गां रो मुंडा रे तमे रहिबो आइदर एपड मुंडा रे रहो न सेपड मुंडा रे रहो या फिर एमिति जगह मसाणी पाखा बाकी रे रहो जो जगह को कहू लोक पसंद कर नथियो जाता राइट तो सेठी रहो इकोनॉमिकली तांको कोनोसी जॉब वगैरह दिया गला तमे ए काम करि परिबोनी तमे होचो अछुआ जाति राइट अनटचेबिलिटी रे पॉलिटिकल पावर तमरो नाही तमे होचो दलित सो अल्टीमेटली एडा कला किए आवर सोसाइटी ओनली नो वी मेड दैट हिस्टोरिकल रॉन्ग जोटा कि गोटे हिस्ट्री पाल्टी गला एंड तमे कहउछ कि बर्तन तमे प्रियम्बल रे कोन लिखिछो जस्टिस इन सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल बिकॉज ऑफ अनटचेबिलिटी हाउ वी आर एंश्योरिंग सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस दैट इज नॉट पॉसिबल liberty of thought expression belief faith and worship they are also because of untouchability they cannot behave the same right तांका पाखर से लिबर्टी नाही से तांका थॉट एक्सप्रेशन को ओपनली डिक्लेयर ही करि पानांती बिलीफ फेथ वर्शिप मंदिर को जिबा चाहउछथि मंदिर को एंट्री करै दियाउनी इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी वेयर यू आर गिविंग द अपॉर्चुनिटी and promote among them all fraternity assuring dignity of individual and unity and integrity of the nation तो बर्तन मते को ना डिग्निटी तांको तमे देलो ना तांको तमे अपॉर्चुनिटी ने देलो ना तांकर फेथ एंड वर्शिप को तमे मायने रखिलो ना तांको जस्टिस मिलिला by default because of this historical wrong the entire preamble is wrong is that clear because of that historical wrong because of this untouchability and discrimination can I say the entire preamble whatever we have which is the heart of the constitution can I say this is entirely wrong जे पर्यंत तमे ई जिंसटा को सजाडी न से पर्यंत तम प्रियम्बल भी ठीक नहीं so hence to protect the backward classes from untouchability provide reservation for human dignity and not for money and power this is the word from B.R. Ambedkar
to protect the backward classes from untouchability, provide the reservation for human dignity. The word has to be mentioned as human dignity and not for money or power. So any society, backward people cannot even look into the certain jobs. କଥା ତାଙ୍କର ଆଗ ଡିଗ୍ନିଟିଟା ତ ତାଙ୍କୁ ଦିଅ କି ସେମାନେ ଏ ସୋସାଇଟିରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା ଦରକାର, ଗୋଟେ ମୁହଁ ଟେକିକି ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ତମେ କହୁଛ କି ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ପୁରେଇବୁନୁ, ତାକୁ ସେଠି ପୁରେଇବୁନୁ, ହଠାତ୍ ତମେ ହବ ନା, ହଠାତ୍ କିନା ତମେ ଜଷ୍ଟ ଜଣ ଗୋଟେ ଖାଇବା ଜାଗାକୁ ଯାଇଛ, ଦେନ୍ ସେଠି ତମକୁ କହିବେ ଟିକେ ବାହାରେ ୱେଟ୍ କର, ଲୋକ ଖାଇସାରନ୍ତୁ ତାପରେ ତମକୁ ବାହାରେ ଆମେ ଖାଇବାକୁ ଦବୁ, ଇଭିନ୍ ତମେ ବସିବା ପାଇଁ ବି ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ ସେ ଭିତରେ, କେମିତି ତମକୁ ଫିଲ୍ ହବ? Where is your human dignity? Are you going inside to eat the food and get money and power, or to have a human dignity? कि तमे सेମାନଙ୍କ ସହିତ ସମସ୍ତଙ୍କ ହେଇକି ବସିକି ଖାଇ ପାରୁଥିବ, ତମ ପାଖରେ ପଇସା ଅଛି, ତମେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ପାରିବ, ବଟ୍ ସୋସାଇଟି ତମକୁ ଆଲାଉ କରୁନି ତମକୁ ଯିବା ପାଇଁ ଭିତରକୁ, କେମିତି ତମକୁ ଲାଗିବ? So hence the National Commission for Scheduled Caste established with a view to protect and provide safeguard against the exploitation of scheduled caste and Anglo-Indian community, and to promote and protect their social, educational, economical and cultural interest. Special provision were made in Constitution Article 338 NCSC, then 338A जोटा कि पर अमेंडमेंट है NCST, 338B NCBC। तो एगुडा तो इनिशियली तो नथिला, एगुडा तो अमेंडमेंट है जो कि A B वगैरह आसिला, करेक्ट नो? तो एटलीस्ट सेमान को प्रोटेक्ट, तो थॉट प्रोसेस कोन थिला? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली जेतले बसिला सेतले थॉट प्रोसेस थिला बाबा साहेब आंबेडकर कि वी आर गोइंग टू प्रोटेक्ट द बैकवर्ड क्लासेस because of their human dignity, not just giving them reservation because of money and power. Is that clear? Yes, sir. Okay, so that was the situation in 1950s, but as we know the constitution itself is a breathing document, am I right? तो जेतेबेले इंटरप्रिटेशन हुए, सुप्रीम कोर्ट इंटरप्रेट करे, सेतेबेले सुप्रीम कोर्ट सोसाइटी को लेके इंटरप्रेट करे। तो जेतेबेले 1950 रे रिजर्वेशन कथा उठिबो, सेतेबेले उठिबो कि नहीं जहा पर्सपेक्टिव थिला, काहे कि बैकवर्ड कम्युनिटी ऑलरेडी अछथि, बट जदि एबेर सिचुएशन देखिबो आउ सेते अनटचेबिलिटी नाही, बिकॉज़ वी हैव एनफ सेफगार्ड, करेक्ट नो? atrocities act वगैरह में ऑलरेडी रखी छे। तो जदि सुप्रीम कोर्ट की लागू छे कि वी हैव सेफगार्ड, नाउ वी कैन थिंक ऑफ क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर, ता ऊपर को आसीबी, करेक्ट नो? ताहाले हमें कहबो कि ठीक अछि क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर ऊपर कथा करबे, नहले हमें माने सुप्रीम कोर्ट अलाउ करिवो। गोटे मने पकाओ जेतले हमें कहले 1950 रे गोटे केस थिला, जो केस रे हमें कहले कि प्रिवेंटिव डिटेंशन, करेक्ट? प्रिवेंटिव डिटेंशन रे कोर्ट पाखरे प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ थिला, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ नथिला, बट जेतले मेनका गांधी केस आसीला सेतले ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को भी से ऐड कर। शंकरी प्रसाद केस, शंकरी प्रसाद केस थिला, गोपालन सर, गोपालन केस थिला, चेन्नई रो केस। तांको प्रिवेंटिव डिटेंशन पेटला बिकॉज़ तांको हटे देले कि से गोटे कम्युनल राइट वगैरह आनु चली ये करी कि एक गोपालन केस रे तांको कहि देथिले कि भाई वी हैव द पावर जस्ट फॉर व्हाट? प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ट्रू? बट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को हमें चेक करि परु, लेजिस्लेटिव रो एक्शन को हमें चेक करि परु कि लेजिस्लेटिव जो वे रे लॉ ता तयारी करछि से लॉ केते दूर वैलिड सेटा को हमें चेक करि परु, बट वी विल चेक द एग्जीक्यूटिव एक्शन। बट जेतले काहे कि एग्जीक्यूटिव, बिकॉज़ प्रिवेंटिव डिटेंशन को से सेतले मानिले इट इज फाइन, बिकॉज़ से टाइम रे हमर कोन हितला पार्टीशन हितला, जोदि भाई झगड़ा जानटी बहुत हैरान होबार थिला, तो सेति कहले प्रिवेंटिव डिटेंशन इज बेटर। बट कमिंग टू 1970s, दैट टाइम लिबर्टी इज मोर इंपोर्टेंट देन द प्रिवेंटिव डिटेंशन, बिकॉज़ से टाइम रे लिबर्टी को फोकस रे निया गला, लिबर्टी को प्रायोरिटाइज दिया हला रादर देन सोशल अनरेस्ट, राइट? कि हां को गोटे लोक आ से भले तो सिचुएशन नाही कि किछ गोटे देश भीतर झगड़ा होची जोटी बाय प्रिवेंटिव डिटेंशन हबार नाही, तो फास्ट लिबर्टी को दिया जाउ चांस। तो सेति भाई मेनका गांधी जोथि पे हमें कहू जे लिविंग डॉक्यूमेंट, लिविंग एंड ब्रीथिंग डॉक्यूमेंट। तो वर्तमान केस रे जदि देखो कि जो टाइम रे 1950 रे दिया हला रिजर्वेशन को पर्सपेक्टिव रे टू रिस्टोर द ह्यूमन डिग्निटी, to restore the whatever historical wrong we did, to restore that we gave reservation for protecting human dignity of those people who are considered to be the weak, who are considered to be the backward. Is that clear? So in 1950s during the constitution, NCSC, it was a single membered body earlier which was taking care of SCs as well as scheduled tribe. So there was a special officer for scheduled caste as well as scheduled tribe. He used to investigate all matters relating to the safeguarding, providing for SCs as well as STs, and he has to report to whom? President. Then it has to report to Parliament. Due to one membered body, again governance, gray area. Due to one membered body, he may be
he or she cannot do the work effectively due to high population. NCSC को कथा भी बुझुतिले ST को कथा भी बुझुतिले तेणु धीरे धीरे कोन हला ताको सेग्रीगेट करा हला. सो 65th constitutional amendment 1990 आर्टिकल 338 रे हला सेथरे कोन हला this replaced one member body with multi member body called NCSCs and ST multi member body, right? तो still not effective. कोडी 338 रे इफेक्टिव हेलानी 338 रे से जो वन मेंबर बॉडी थिला जोटा कि केवल एनसीएससी थिला से एनसीएससी रे 1950 रे कोन थिला एनसीएससी से एनसीएससी रे से कोन बुझुतिले गोटे वन मेंबर बॉडी थिला जे कि एससी कथा बुझुतिला आ एसटी कथा बुझिला. देन 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जोटा कि आर्टिकल 338 रे कोन कला ना एनसीएससी एंड एसटी भी लेखिला. ठीक अछि बट स्टिल काम होई पालानी. देन 2003 रे 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे 338 ए आसिला जो थे NCST and NCST आ गोटे NCSC दीटा वर्ड आसिला राइट. सो 3333A it is related to whom? NCST. is that clear? 89th constitutional amendment जदी कहबा कि NCST आंसर दे दियो भाई. 65th constitutional amendment, 89th constitutional amendment, 76th constitutional amendment, 74th constitutional amendment. The answer will be NCST जदी लिखाई देबो NCST then it is related to 89. but जदी आसीबो NCSC and ST it is related to 86 65. 65. is that clear? then धीरे धीरे कोन आसिला कि से पर्सपेक्टिव जाय ए बैकवर्ड क्लास वाला कांसेप्ट ही आसी नथला. मु तुमको देखिबी बहुत सारा आर्टिकल थिला जोथरे को एटा डिराइव कराला कि व्हाट इज दिस बैकवर्ड क्लास. तो 102 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018 रे आसिला जोथरे कि 338 बी आसिला. तो बर्तन सिंपल 338 दिस इज रिलेटेड टू एनसीएससी. 338 ए जोटा हे गला तमरा एनसीएसटी. 338 बी जोटा हे गला तमरा एनसीबीसी. इज दैट क्लियर? Yes. नेक्स्ट एनसीएससी रो बर्तमान मेंबर. तो गोटे मेंबर जेतला हम देखुचे वन चेयरपर्सन, वन वाइस चेयरपर्सन एंड 3 अदर मेंबर्स. ठीक अछि. तो चेयरपर्सन जे ही हैज टू गेट ए कैबिनेट मिनिस्ट्रियल रैंक. वाइस चेयरमैन जे से गोटे स्टेट मिनिस्ट्रियल रैंक एंड देयर आर 3 अदर मेंबर्स. अपॉइंटमेंट किए देबे ना प्रेसिडेंट देबे. कंडीशन ऑफ द सर्विस एंड टेन्योर प्रेसिडेंट विल डिसाइड and there will be role and functions. Now SC/STs there are something called Prevention of Atrocities Act 1989 as well. That means any crime as practice of untouchability if that reports other measures of protections, welfare and social economic development of scheduled caste. These are the role and function of the NCSCs. Now it is again saying what recommendations are never binding to the government while directions is binding. Now what they will do? Same as CBC, it is again recommending. So NCSC have the powers to regulate its own procedure. Union and state governments shall constitute union and state governments shall consult the commission on all major policies affecting scheduled caste. They will do research on scheduled castes and scheduled tribes. So NCSC equal to NCST equal to NCBC. जो तमे देखो तो गोटे आसिला 338 आर्टिकल जोटा कि 65th. This is what I am saying. Prelims, right? NCSC 338 आर्टिकल 65 नंबर अमेंडमेंट 1990 रे. NCST 338 ए 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2003 रे. NCBC 338 बी 102 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2018. Then now the concept is National Commission for Backward Classes 1993 रे एस्टैब्लिश होला as statutory body. स्टैट्यूटरी बॉडी नेशनल कमिशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस 1993 एस्टैब्लिश होला. मंडल कमिशन पर पर से एस्टैब्लिश करले स्टैट्यूटरी बॉडी अंडर. बट ताकू कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी केबे बना होला 2018 रे. एनसीबीसी बुझियला ना बुझियलानी. सी एस्टैब्लिश हेतिला स्टैट्यूटरी बॉडी हिसाब रे बट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस केबे मिलिला 2018 रे 102 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे. काईना जे पर्यंत अमेंडमेंट करना से पर्यंत तमे ताकू कॉन्स्टिट्यूशन रे पुरेबो केमती. तो कॉन्स्टिट्यूशन रे किछि चेंज होवा बोले तो अमेंडमेंट दरकार. एंड कॉन्स्टिट्यूशन रे जब तुम गोटे आर्टिकल पुरे देवार अछि रिलेटेड टू एनसीबीसी देन ताले तुम अमेंडमेंट गोटे दरकार. दिस इज व्हाट वी अंडरस्टूड. नाउ देयर इज समथिंग कॉल्ड लिबर्टी. नाउ बिफोर गोइंग टुवर्ड्स द रिजर्वेशन, राइट? So I am talking something from the perspective of liberty, equality, fraternity. This was the battle cry of whom? French Revolution. तो जदि तमे देखिबो कि कॉन्स्टिट्यूशन हमर कॉन्स्टिट्यूशन इज ए बोरोइंग डॉक्यूमेंट काहाटू कोन कोन आछतो तो तमे एटा तो सुनिदियो ना लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रैटर्निटी गुडा काहाटू आछे आबे
France ru correct. France. And it was a battle cry of French Revolution. They had revolution. We never had revolution, right? So it was a battle cry of them, France Revolution. It is also the motto, our objective, preamble, our objective, liberty, equality, fraternity. That is the objective or motto of our constitution, which is present in the preamble, with the concept of justice, social, economical. Ahuri extra kon pakele, liberty, equality, fraternity da pakele. Ta saita amari justice bhi pakele ki bhai justice has to be social, economical and political. The sum total of modern political thought super added to this liberty, equality and fraternity. खाली liberty, equality, fraternity कहिदेले हबनी. जदी काली जनकर liberty गला, जदी काली जनकर equality गला, जदी fraternity न होई परिला, किछि गोटे असुविधा आसिला, then where you will go for complaint, redressal mechanism कोठी हबो? Justice. You need justice ultimately, right? कि काली मोर जदी liberty break हला, ताले मते दरकार कोन justice. तो तमे जदी देखिबा आगो ही हम preamble रे अछि कोन justice, then liberty, equality, fraternity. True. So justice is most important. Now, equality has been is the single greatest craving of all human beings at the all point of time. It has inspired many great thinkers and philosophers. All the religious, political school of thought sure by it. It is related to equality. It also including the Hindu religious thought. If one looks into it, ignoring the latter crudities and distortions, liberty of thought, expression, belief, faith, and worship has equally been abiding faith with all human beings and all times in this country in particular. That means it is a without equality, you are not going to achieve anything. Neither you can achieve the liberty of thought and expression, belief, and faith, or worship. Neither you are going to achieve fraternity. So equality, it is by default, it is mentioned in Hindu religious thought also, it is mentioned in the political school of thought also. Jodi tame koho na Karl Marx, they are talking all about inequality, and they are talking about inequality, but what they are trying to do is to restore equality. Am I right? Karl Marx, economical inequality, say ultimately चाहूचंदी कोन कि there will be a condition where they will restore equality, there will be equality among the people. Am I right? So ultimately तमे चाहो school of thoughts हो, political school of thoughts हो, religious हो, everyone they are saying भगवान एक है, right? सबका भगवान एक और सबका मालिक एक है, right? So it is all about, they are talking about equality. So equality is also the topmost thing. Not only liberty, fraternity, that can be achievable through equality, and the equality hi na milila, then where you have to go? Justice. And that justice has to be social, economical and political. Anyway, fire started from French Revolution. They talked about liberty, equality, fraternity, that is related to individual life. Baba Sahib Ambedkar, my philosophy is based on the religion, not on the French Revolution. So in our religion, our philosophy is mostly related to equality. Okay. Anyway, so in India, particular section, it has been discriminated. That means where it is achieving equality, there is inequality in the society, there is no justice, dignity nahi, hence no liberty, no equality, no fraternity, no justice. Because in our India, during the time of 1947, already there was discrimination, already there was inequality, already there was injustice. Dignity hi loko manava bhetere nahi. That means then how you are going to assure liberty, how you are going to assure equality, how you are going to assure fraternity and justice. Hence, give 15% reservation to SC or STs. Hence, India left behind from other countries. So the people, those who are deprived due to us, again, it is important, due to us, it is not due to some external agent. एमिति नुह कि बाहर को देश कहूँ कि भाई तमे तुमको बांटी देकी जीवु. सी से माने हिंदू मुस्लिम रिलीजियसली डिवाइड करथिले हं कि नै, बट कास्ट अनुसार से माने डिवाइड करथले कि भाई तमे तळुआ जाति तमे पानी पी पारुनी, एगुडा होची आम लोक ही करछथि. बिकॉज इट इज ड्यू टू अस, हेंस दे नीड सम रिजर्वेशन पॉलिसीज फॉर सम टाइम so that they can get level playing field, means equal opportunity to diya tangu. Equity, this is related to equity, which mentioned in article 14 also, and in this process maybe we'll able to correct the historical wrong. You understood the concept? This is exactly from Baba Sahib Ambedkar thought process ki because we did something to the population, and this is what time 1950s wala concept, right? And they कहले कि सेते बेले रिजर्वेशन पॉलिसी दियो, but for what? For some time
such that there will be a level playing field, at least gote level ku semane pale asbe, there will be level playing field so that they will be considered to be equal among others. And in this process we will able to correct the historical wrong. Is that clear? So reservation asila ki schedule caste, schedule tribe, ଆଉ ଗୋଟେ ଆସିଲା other backward classes ପରେ ତ ଆମେ ପରେ କହିବା, but this is what we call president can put certain classes into one list. ତ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ କହୁଛେ schedule tribe, schedule caste ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କୋଉଠି ଅଛି, ଆମର schedule mention ଅଛି ନା, ତ schedule ରେ ଆସିଯିବ ନା ନାହିଁ. So who will put into the schedule? The president can put certain classes into one list. That's what we call schedule. SC and ST parliament also can add or subtract to that list, but first power authority will be on president, then on the parliament. So article 341, 342, central government can control. There won't be any control from the state, only SC STs, and they are not talking about OBC that time, only SC STs, right? So authority will be on the president, who will be adding to the particular schedule. Then parliament also can add or subtract from that schedule. Is that clear? See, economics रे मु केवल स्कीम कहबी, बट तार पॉलिटिकल बैकवर्ड लिंकेज तुमको प्रॉपर्ली जानि दरकार कि हेची कोन. तो आमे बर्तन कनेक्ट करले को थ्रू डॉट्स ना, आमे कनेक्ट करले ह्यूमन राइट कमिशन रु, देन आमे ह्यूमन राइट कमिशन को कोठ को आसिले ना एनसीएससी को आसिले, देन एनसीएससी रु काहे की प्रॉब्लम हैला, बिकॉज़ एटी गोटिए मात्र मेंबर बॉडी थिला, राइट, गोटिए स्पेशलाइज्ड ऑफिसर थिला जे कि एनसीएससी को कथा बुझिबो प्लस एसटी को कथा बुझिबो, जोथि पे आमे 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कले, जोथि केवल 338 रे एनसीएससी को रखिले. देन आमे कोन कले 89th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को मसिया रे सेटा 2003. तो सेठी आमे कोन कले एनसी एसटी को रखिले. देन 102 नंबर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को मसिया 2018 सेठी आमे कोन एनसीबीसी रखिले. तो बर्तन तो मु बर्तन कहू छी कि एनसीबीसी तो छाडी दियो हेबे, एनसीएससी और एनसीएसटी को बाबा साहेब आंबेडकर काहे की चाहूथिले दवा पाई कोन ना रिजर्वेशन. एंड ए रिजर्वेशन काहे की इंडिया पर्सपेक्टिव रे इंपोर्टेंट, and it is not available in other countries because other countries जतले फ्रेंच रिवॉल्यूशन हला तमे कंपेयर करबो ना कि भाई फ्रेंच रे तो हला नहीं, देन इंडिया रे काहे रिजर्वेशन पॉलिसी. देन बाबा साहेब आंबेडकर थॉट प्रोसेस कोन, आई एम नॉट एस्पायरिंग, like I am not inspired by French Revolution because that was the battle cry of French Revolution related to what? Equality, liberty and fraternity. But in case of India, it is because of us. When India was given by the Britishers, there was the time where there was discrimination, there are untouchability, and those discrimination and untouchability was happened due to whom? Due to our own people only. That means we made a historical wrong, and to ensure or to restore that historical wrong taku jodi हमको neglect करियार अछि, then at least give some reservation policy so that for some time they will come to the level playing field, and so that in that way we will try to correct whatever historical wrong we had. Is that clear? Okay. Next. So president will add to the list the constitution, schedule caste, order 1950, can take recommendation from governor of the concerned state. President recommendation nahi paribo, but again whenever we are saying recommendation, it is not binding. Directions are binding, recommendations are not binding. So schedule caste, they are untouchable, so they had historical wrong. SCs ମାନଙ୍କ ସହିତ historical wrong ହେଇଥିଲା, but if you talk about scheduled tribe, they are isolated. ସେମାନେ isolated ହେଇକି ଥିଲେ, they were vulnerable, anthropologically proven through anthropological wing also. भाबिनियो ना बर्तन से isolated ହେଇଛନ୍ତି, they cannot able to mix with other people, right? For example, जदि तमे ए एरिया रे अछ एंड ए एरिया रे जो पुओ झियो माने अछंती से माने सेही कम्युनिटी सहित ही मैरिज करिवे, तो बाय डिफॉल्ट जो पिला जन्म होबो से पिला तो सेही भले ही देखा जिवो. ट्रू. जदि तांकर मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी बाहर को रही थांदा, से माने अलग अलग स्टेट आडे जाई कि सेठी जदि मिक्स हेकी रहउतांदे, सेठी चलुतांदे, सेठी मैरिज कले, देन जना पड़ला कि ताले गोटे इंटरमिक्सिंग ब्रीडिंग गोडा चेंज होबो, राइट. देन तांकर फेस कटिंग, the behavioral change, ये सब जिंस आसीबो. किंतु anthropologically proven also कि there was a anthropological wing, सेथु विषय ने proven नहीं जानते कि because they are isolated, they were also vulnerable. So the Government of India Act 1935, which carried the definition of scheduled caste in part 14 of the act, in 1935 ro Government of India Act सेथरे भी define is scheduled caste. That means it is not like 1947 पर माने डिफरेंशिएशन हैला, ता पूर्व ही सोसाइटी रे हमर कोन थिला
डिस्टिंग्विश हेकि थिले कि भाई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र एंड शूद्र मानक भितरे तांकर आहुरे डिफरेंशिएशन कि भाई यू आर अनटचेबल, राइट? सो आर्टिकल 46 in 1950 constitutional amendment act, sorry not constitution of India, not amendment act, 1950 ର constitution of India जेतले जनवरी 26 रे आसिला article 46 रे हमर कोन मेंशन अछि, the state shall promote with special care the education and economic interest. What are the thing I am mentioning? किए promote करिवो ना, state shall promote, and article 46 is it fundamental right or DPSP? That is state shall promote. जदि state नकला भी काहर किछि जीवनी केही जाई कि कहबो कि सुप्रीम कोर्ट रे यार भाई स्टेट को कहैतला से काई करूनी, तो स्टेट केतेले करबो जेतेले ता पाखरे इकोनॉमिकल अवेलेबिलिटी थिबो। जदि इकोनॉमिकल कंडीशन स्टेट रो भलो अछि ताले से करि परिबो, जदि नकला भी तमे तार विस्तार अगेंस्ट किछि कर परिबोनी। ओके, सो जेहेतु एटा आर्टिकल 46 रे अछि एंड व्हाट्स देखो कोन लिखा अछि ना, द स्टेट शैल प्रमोट स्पेशल केयर, मीन स्पेशल केयर दबो को सेक्टर रे ना, एजुकेशन रे and economic interest rate of weaker section of the people, and there is not ki or, there is and in particular of SC ST. That means this is different and this is different. Till now there are NCBC 1935 रे कोन कहला शेड्यूल कास्ट कथा कहैतला, करेक्ट नो? बट 1950 रे तमे आनि के आसिलो गोटे weaker section आ गोटे आनिलो कि SC ST. That means तमे कहउछ कि ए weaker section is something different than SC ST. Am I right? True. So argument perspective रे जदि मु देखिबि कि भाई तमे जेतले लिखुछ कि weaker section of the people and in particular SC ST, that means this SC ST are different, जोटा कि 1935 रो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट रे भी मु देखिली कि देयर इज ए मेंशन ऑफ NCS माने SCs शेड्यूल कास्ट, but what is this weaker section and shall protect them from social injustice and all form of exploitation. जेतले exploitation आसीबो you have to connect to NHRC, human right commission. तो डॉट कनेक्ट होउची, you have to exploitation asila, you have to connect to human right commission, you have to connected to UDHR, you have to connected to Paris principle, you have to connected to protection of human right act 1993 157. tenure hoji 3 वर्ष till the age of 70. chairperson has to be chief justice of India, supreme court or judge of supreme court. then 5 जण भितरु जणे होची जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जणे होची चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सॉरी चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, आउ 3 जण मेंबर सेतिरु जणे वुमेन मैंडेटरी, आ बाकी 7 जण ए माने NCSC NCBC NCST से मानकर मेंबर, बट दीज आर कॉल्ड द डीम्ड मेंबर्स. एति की मने रहिबो. ओके, so now coming to little bit towards that NCBC, right? So whenever we are saying weaker section, also some other group of the people other than SC ST, as I already told, because they mentioned and in between. So there was a case. The case कोन आसिला ना, चंपकम दोराई राजन केस. केबे ना ए केस ता होची 1950 रो. Anyone knows about that case? चंपकम दोराई राजन? No. Okay. There's the medical student ऊपर जो केस ता थिला कि true medical student ऊपर. Now the कथा होची कि 1950 रे मेडिकल स्टूडेंट भाई चंपकम दोराई राजन बहुत बढ़िया पढ़ा बर्तमान से पढ़ले कि चेन्नई को कि भाई मते दियो तमिलनाडु रे गोटे मेडिकल इंस्टीट्यूट को कि भाई आई वांट टू गेट ए एडमिशन, बट दे टोल्ड देयर वाज ए कम्युनल गवर्नमेंट दैट टाइम, कम्युनल गवर्नमेंट गोटे ऑर्डर पास करथिला रिजर्वेशन. नाउ दे टोल्ड लाइक दिस मच परसेंटेज ऑफ द सीट हैज बीन ऑलरेडी रिजर्व फॉर सर्टेन कैटेगरीज. दैट मींस आउ जेति कि अछि तो सी तो से जो कैटेगरी अछि बर्तन रिजर्वेशन से माने कहले ना, देन बर्तन तुमको आर्टिकल गुडा बहुत भल से बुझिया पड़ियो, बिकॉज़ जेते बेले कॉन्स्टिट्यूशनल मुद्दा आसीबो सुप्रीम कोर्ट रे तो से गुडा तो मोस्टली तुमको कोठी लेके जीवो फंडामेंटल राइट आडू लेके जीवो, करेक्ट नो? तो फंडामेंटल राइट रो प्रतिटी सेक्शन जदी क्लियर नथियो देन आर्टिकल गुडा एठी भी माने केस गुडा बुझिया भी कष्ट होइबो. तुमको कोन कहली कि चंपकम दोराई राजन तांकर बहुत भलो मार्क थिला. लेट सपोज भाबिनियो से ओपीएससी देले, ओपीएससी रे जदी जनकर रहिची जनरल कैटेगरी रे कट ऑफ जाइची 100, जनकर अछि 102 मार्क. रिजर्वेशन कैटेगरी रो पिलार कट ऑफ जाइची 90 एंड गोटे पिलार अछि 92. बर्तन मते को 102 नहीं भाबिनियो 99 अछि. चंपकम दोराई राजन कर 99 अछि एंड रिजर्वेशन कैटेगरी रो पिलार अछि 92, बट एठी चंपकम दोराई राजन बिकॉज़ कट ऑफ जाइची 100 तांको सीट तो मिलिवनी, मिलिबो कि 1950 पछरे तांको सीट मिलिलानी. काहेकि मिलिलानी?
बिकॉज 92 रे मिलिला बिकॉज एठी किछिटा सीट रिजर्व थिला किंतु सिए कहया कथा कि आठु तो मु मेरिट बेसिस रे मु भलो अछि एंड देयर इज इक्वालिटी 1950 अनुसार से कहले भाई आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कोन कहउची तो सी बर्तन कौन हला सी बर्तन क्वेश्चन कौन ना चंपकम दोराई राजन आई विल जस्ट एक्सप्लेन कि चंपकम दोराई राजन जे कि गोटे ब्राह्मण गाम थिले ठीक अछि तो सी स्कोर्ड सफिशिएंट मार्क टू गेट इनटू द एडमिशन इनटू वन ऑफ द रेप्यूटेड मेडिकल कॉलेज बट द कॉलेज डिनाइड एडमिशन टू चंपकम दोराई राजन कौन ना ताकर क्वेश्चन रहला कि दिस कम्युनल गवर्नमेंट ऑर्डर जोटा कि कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन देछि इन एजुकेशन एंड जॉब how much it is valid this is invalid because it is violation of article 16 clause 1 it is also violation of article 29 clause 2 मु बर्तन गोटे गोटे करके आर्टिकल को जीबी राइट सो इट इज सेइंग कि भाई ये जो स्टेट कम्युनल गवर्नमेंट जो ऑर्डर पास कला रिलेटेड टू दिस हाउ इट इज valid because this is affecting article 16 clause 1 article 29 clause 2 ये दीटा को मोर फंडामेंटल राइट ना नहीं fundamental right Yes, that sir. means what article 13 tells कि if states make any laws correct no and if state make or anything in state do anything which violate the fundamental right of a person then whatever laws are being there that will be constructed as null and void true तो जदि स्टेट रो एठी कोनोसी एक्शन स्टेट कहला कि भाई हम रिजर्वेशन दे देलु इज दैट रिजर्वेशन valid or invalid constitutional रा validity दरकार देन से सुप्रीम कोर्ट को गले चैलेंज कहा पे कहले 16 clause 1 and 29 clause 2 okay see equality of opportunity in matter of public employment what is it is saying there shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under state now state under रे जो जो ऑफिस अछि सेठी इक्वल अपॉर्चुनिटी हेगा दरकार second 16 clause 2 this is most important through which he also challenged कि no citizen एमिति को citizen नहीं जहा को on the ground of only religion race caste sex descent place of birth resident of any of them be ineligible or discriminated against in respect of any employment or office under the state now this is one point this is another point now जदि मते कह कि बर्तन चंपक दराई राजन who got sufficient mark to get into admission now she has been denied to get admission because of what caste reservation she was discriminated now एठी तमे 16 clause 2 रे कोन लिखिजो no citizen true होंगी नहीं okay now state रो argument कोन आसला state कहला भाई you are talking about 16 now what is 29 just see 29 also 29 plus 2 29 clause 2 yeah 29 clause 2 no citizen shall be denied admission into any educational institutions maintained by the state तो जदि स्टेट को भी इंस्टीट्यूशन को पैसा दउची सी these are very core principles right एमिति न कि टिके टिके सुनी कि खाली रट्टी देकी पळेबो सिंपल जिंस जदि स्टेट को गोटे पर्टिकुलर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को पैसा दउची इफ दैट एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इज रनिंग through the fund given by state or receiving any aid out of the state fund on the ground only of religion race caste language or any of them that means no citizens shall be denied on the ground of these if they are going to admit in any educational institution which is maintained by the state is that clear मते वर्तमान दीटा कथा को कि 16 क्लॉज 2 आ 29 क्लॉज 2 जोटी स्ट्रेट फॉरवर्ड को होची 16 क्लॉज 2 रे से माने कोन कहले कि भाई देयर शुड नॉट बी एनी डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन द कास्ट ट्रू 29 क्लॉज 2 कोन कहउची कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जोटा कि स्टेट द्वारा रन करा होची सेठी भी कोनोसी लोक को तमे डिनाई करि परिबनी बेस्ड ऑन द कास्ट now you tell me from the perspective of Champak Dorai Rajan those arguments related to reservation was that valid it was valid correct no because that reservation of the state government ro communal order means executive order right तो से order टा बर्तमान violate करूची मोर fundamental right ताले article 13 अनुसार ताकू null and void declare करा जीवो ना नहीं correct so that should be on whom supreme court now एटा तो चंपक दोराई राजन कर पॉइंट ऑफ व्यू गला तांकर आर्गुमेंट गला व्हाट इज द अपोजिशन आर्गुमेंट अपोजिशन रे की अछि स्टेट ऑफ मद्रास तो सेमान एड्रेस करले कि भाई वी डोंट केयर अबाउट आर्टिकल 16 क्लॉज 2
neither we care about article 29 clause 2. What we care is article 46. What we care is article 46. Just see what is article 46. Promotion of education and economic interest of scheduled castes, scheduled tribe and other weaker sections एथिरे कोन कहछि the state shall, again very important, the state shall promote with special care the educational and economic interest of the weaker section of the people and in particular scheduled caste and scheduled tribe and shall protect them from social injustice and all form of exploitation. Now there is a contest between fundamental right versus DPSP. Both are contradictory. बर्तन जोठी तमे 16 प्लस 2 आउ 29 प्लस 2 रे देखिथिला कोन कि भाई व्हाट इज दिस सेठी तमे कहउछ कि कास्ट पर्सपेक्टिव रे डिस्क्रिमिनेशन होबनी इन 16 प्लस 2 करेक्ट नो 29 प्लस 2 रे कहउछ कि जदी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अछि जोटा कि स्टेट द्वारा चालुछि स्टेट फंडेड सेठी भी तमे काहा को एडमिशन को डिनाई करि परिबनी जदी से माने जेंडर हे गला कास्ट हे गला सेक्स हे गला रिलीजन हे गला हंगी नहीं बट एठी तमे कहउछ कि स्टेट चाहिले करि परिबो बेस्ड ऑन व्हाट कि वीकर सेक्शन scheduled caste scheduled tribe then what is this caste what is this weaker section then एठी तमे कहउछ रिजर्वेशन तो गवर्नमेंट रो लॉयर स्टेट ऑफ मैड्रास पर्सपेक्टिव रो आर्गुमेंट होची कि भाई व्हाटएवर वी डिड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द स्टेट डीपीएसपी रे ऑलरेडी मेंशन होची तो आर्टिकल 46 को इंप्लीमेंट हमें करिछु से कहउछ कि भाई तमे तो आर्टिकल 46 इंप्लीमेंट कलो बट मोर फंडामेंटल राइट इश्यू आसिला तो वर्तमान मते को कि एटा वर्तमान कोन हे गला कॉन्स्टिट्यूशनल राइट एटा भी कॉन्स्टिट्यूशनल अछि से दिटांग भी कॉन्स्टिट्यूशनल अछि नाउ व्हिच इज सुप्रीम नाउ द क्वेश्चन इज नॉट इनवैलिड वैलिडिटी it is related to who is supreme when there is a conflict between fundamental right versus DPSP. Then Supreme Court told whenever there is a conflict between fundamental rights versus DPSP, it is the fundamental right which will take the priority. That's why Supreme Court रो judgment आसिला कि भाई जो communal order आसीथिला for the reservation that is considered to be null and void. Is that clear? एतिकी बुझियला ना बुझियला? See, I am talking about 1950s कथा. वर्तमान फंडामेंटल राउ डीपीएसपी कथा जदी आसीबो देयर इज ए हार्मोनी डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियम इंटरप्रिटेशंस राइट 1980s को सेटा पळे आस्तिला सेते मो कहूची दिस जजमेंट राइट दीज आर लिविंग डॉक्यूमेंट्स लिविंग कि प्रति जजमेंट ओडा डिपेंड करे सिचुएशन ऊपर 1950 रे जेतले से माने देखिले फर्स्ट टाइम केस भाई 1950 रे कॉन्स्टिट्यूशन तयार हेला हठात ना 1951 रे पळे आसला ई भले गोटे केस रे देन सेटी क्वेश्चन पदरा होची कि व्हाट इज सुप्रीम fundamental right supreme or DPSP supreme then they told ki whenever there will be a conflict between fundamental right and DPSP it is the fundamental right which will take the precedence and DPSP will follow because DPSP is state kari pare na kari pare but fundamental right it is has to be ensured by the state hon ki nahi to bartana mate kuha joti bartana mate kuha joti so now you tell me ki in case of fundamental right and DPSP जोठी बर्तन सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट गोटे गवर्नमेंट अगेंस्ट रे गला देन गवर्नमेंट को कोन फील हबो आर वी वीकर दैट मींस सुप्रीम कोर्ट तो हमहु चैलेंज कर देला देन से माने कोन करले से माने नै के आसिले वेयर इज माय डॉक्यूमेंट गिव मी अ सेकंड आपरे देखो आसिला अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आर्टिकल 15 क्लॉज 4 सी एमिति ही पढंती एक्चुअली तो कॉन्स्टिट्यूशन को तमे जदी आर्टिकल 1 एजरे आर्टिकल 1 15 क्लॉज 1 15 क्लॉज 2 15 क्लॉज 3 सी कथा तार लिंकेज तो देखो 15 क्लॉज 1 ऊपर चैलेंज हला व्हाट इज 15 क्लॉज 1 टिके देखो 15 क्लॉज 1 16 क्लॉज 2 तो देखिलो ना होंगी नहीं 15 क्लॉज 1 देखो The state shall not discriminate against any citizen on the ground of religion, race, caste, sex, place of birth, or any of them. Correct? No, caste अच्छी. Then, यहाँ पर इस तरह challenge है कि how come 46 is implied कि मोर आर्टिकल 15 क्लॉज 1 कटिला, मोर आर्टिकल 16 क्लॉज 2 कटिला, मोर आर्टिकल 21 क्लॉज 2 को अफेक्ट कला. कोटा ना आर्टिकल 46. So 46 cannot be used and Supreme Court decision कौन आसला ना fundamental right is greater than DPSP. Any doubt in this? Champakam Dorai Rajan case. Any doubt? Supreme Court judgment? No, sir. Okay. So the Supreme Court कही देला कि like fundamental right is superior than DPSP and DPSP को करे जी के state रा power state चाहिए करिवो state न चाहिए न करिवो तो काली हठात यूनियन गवर्नमेंट कहबो कि भाई state रा power को fundamental right काट देला that means fundamental right is becoming more superior तो ताकू fundamental right को ताले मु weak केमिति करबी
एमिति नुह कि फंडामेंटल को मु काटी देबी बिकॉज इट इज वेरी फंडामेंटल राइट्स करेक्ट नो एंड आकु प्रोटेक्ट किए करूची ना आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट करूची हां कि नहीं फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट किए करूची आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट करूची ना Yes, no. Judicial review. तो बर्तन ता माने कथा होची कि मु फंडामेंटल दैट मींस मु तो फंडामेंटल राइट को काटी ही परिबिनी ट्रू जदि मु फंडामेंटल राइट को काटी ही परिबिनी देन ताले मो पाखरे अछि ऑप्शन कोन करिया पई ताकू मु केवल वीकेंड करि परिबी बुझियला ना बुझियला नि तो वीकेंड केमिति करिबी जदि ता अगेंस्ट रे मु एक्सेप्शन पुट करिबी ट्रू तो एक्सेप्शन कोन पुट हैला ना आर्टिकल 15 क्लॉज 4 व्हिच स्टार्टेड इन फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1951 कोन आसिला नथिंग इन दिस आर्टिकल ये आर्टिकल रे एमिति किछि नाही 15 रे इन क्लॉज 2 ऑफ 21 जो 21 रे तमे कोन कहलो 21 क्लॉज 2 रे कोन थिला कि एजुकेशन रे काहू तमे डिनाय करबोनी बेस्ड ऑन द कास्ट ट्रू जदि से गवर्नमेंट द्वारा फंडेड हेतिबो तो 15 क्लॉज 4 रे से माने कहले नथिंग इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज 2 ऑफ 29 shall prevent the state for making any special provision for advancement of any socially and educationally backward classes of citizen for or SCs that means तमे बर्तन को जदि मु 29 क्लॉज टा को कटेइबी ताले मु कोन करिवि मु फंडामेंटल राइट को वीक करिवि फंडामेंटल को राइट तो हटे दे परबिनी मते तमे को ना 16 क्लॉज 2 टा को मु पूरा उड़े देबी कि उड़े परबिनी उड़े देला माने हठात ना भाई केमिति तमे उड़े दबो नॉल एंड वॉइड करेक्ट नो आर्टिकल 13 प्रोटेक्ट करछि ना ताकू and article 13 again article 32 is considered to be fundamental to fundamental right article 32 itself is a fundamental right which is protecting the fundamental rights am I right तो article 16 clause 2 को तो तमे हटाई परिबोनी because it is being protected by 13 and it is by through 13 it is also protected by 32 itself is a fundamental right this 16 clause 2 itself is a fundamental right तो मते आकू वीक करबी वीक कोन करबी ना सेइथरे पकेबी 29 clause 2 fundamental right सेइथरे पकेबी कि जेतले से कहले कि भाई फंडामेंटल राइट इज सुपेरियर बिकॉज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड 29 क्लॉज 2 रे एजुकेशन पर्सपेक्टिव रे लिखि देचंदी कि भाई नो सिटीजन कैन बी डिनाइड इन एजुकेशन और इकोनॉमिकल सेक्टर्स because of its caste जेंडर रेस और रिलीजन एंड जदि सेटा स्टेट द्वारा मैनेज होछि तो बर्तन से माने कोन कहले कि आर्टिकल 15 क्लॉज 4 रे पकेले नथिंग इन दिस आर्टिकल इन क्लॉज 2 ऑफ आर्टिकल 29 shall be prevented the state from making any special provision कि state जदि काली कला ताहाले article 15 clause 4 will take the precedence over 29 clause 2 बुझियला ना बुझियला नि तो 29 clause 2 को से माने वीकेनिंग करे देले ठीक अछि सो there is the concept of SCBC weaker section से माने again 15 clause 4 रे लिखले 1951 रे again से माने लिखले educationally backward classes wow now the question is who is the backward classes ता ऊपर क्वेश्चन उठला सो आर्टिकल 340 रे president may by order appoint a commission consisting of such person as he thinks fit to investigate the condition of socially educationally backward classes see again मु काहे कि बारंबार backward classes काहे कि दोराई राजन केस एगुडा काहे कि आसला बिकॉज़ आमे बर्तन गोटे प्लेटफॉर्म तयारी करूचे जोथरे कि ओबीसी माने आसीबे बुझियो ना बुझियोनी because OBC ए पर्यंत कांसेप्ट ही नहीं OBC रो till the time जे पर्यंत से कांसेप्ट ही बनिनी OBC रो 1993 नो आसी से पर्यंत सब खाली NCST आउ गोटे वीकर सेक्शन who is that weaker section who is that other backward classes तार खाली जस्ट तमरो कॉन्स्टिट्यूशन रे खाली वर्ड अछि बट OBC वाला किछि प्रोविजन ही नहीं बुझियो ना बुझियोनी तो तार बैकग्राउंड जानिया बोले हमको जिया पड़ियो कोठी की ना हमको जिया पड़ियो आर्टिकल 16 क्लॉज 2 हमको जिया पड़ियो आर्टिकल 29 क्लॉज 2 हमको जिया पड़ियो चंपाकरा दोराई राजन केस हमको जिया पड़ियो आर्टिकल 46 राइट जोथरे कहैतला कि सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन अदर वीकर सेक्शन एंड एससी एसटी अगेन आर्टिकल 340 रे कि प्रेसिडेंट को कहउतला आर्टिकल 340 तो 1950 रे आस्तिबो ना हां कि नहीं 1950 रे आर्टिकल 340 रे कोन कहला कि भाई socially and educationally backward classes within the territory of India, not SC STs. That means again the backward classes. Who is the backward class? So it is already available in original constitutions, which is added to 15 clause 4 also. Hence, this implies other backward classes. मते वर्तमान को कि SC STs और other backward classes रे किछि डाउट अछि भाई SC STs SC तो वर्ड ता तो 1935 रु चलछि करेक्ट देन SC ST से माने मिसी कि दिले जेतला हमर कॉन्स्टिट्यूशन रे दिला देन 338 तो 1950 रु चलछि 340 तो 1950 रु चलछि
किंतु ओबीसी वाला कांसेप्ट किसी चल नथिला जोटा कि 1993 रे स्टार्ट हला तो ओबीसी को जानिया गले फास्ट तुमको चंपकराज दोराइजन केसटा भी भलसे जानिया पड़िबो जोटा कि तुमको कनेक्ट करबो हु इज दिस अदर बैकवर्ड क्लासेस बिकॉज़ 46 रे मेंशन अछि डीपीएसपी रे मेंशन अछि इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन बुझियला ना बुझियला ओके चलो देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 340 right article 340 president appoint backward classes commission not caste this is a classes backward classes it is not a caste it is not scheduled caste it is backward classes hence because this is a class of group of people right what a class रे group of people था group of caste था so we need to do investigate and it has to be recommended to president कि who is going to be involved in that class बुझेला ना बुझेला नहीं बिकॉज जदि कास्ट हेतांदा प्रेसिडेंट पाखरे ऑलरेडी पावर दिला भाई प्रेसिडेंट डायरेक्ट ऐड करबो शेड्यूल रे राइट एनसी एससी जे जाऊ एसटी जे जाऊ एमानु की ऐड करबो प्रेसिडेंट ऐड कर दबो देन पार्लियामेंट हैज द ऑप्शन कि सेकंड रे से माने ऐड या सब्ट्रैक्ट करिवे बट कथा होची तले तमे कहू बैकवर्ड क्लासेस आज दिस इज नॉट ए कास्ट तो प्रेसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करिया पड़िबो गोटे कमिशन रे एंड रेकमेंड भी करिया पड़िबो रेकमेंड कले प्रेसिडेंट को देन प्रेसिडेंट कहबो ओके दिस इज नाउ एडेड जोथि बेंकी तमे कहबो ओबीसी रे को माने ऐड हेचंदी स्टेट लिस्ट रू गोटे ऐड आसीबो तांकर एससीबीसी सो फर्स्ट बैकवर्ड क्लास कमिशन वाज सेट अप बाय प्रेसिडेंशियल ऑर्डर ऑन 29 जनवरी 1953 रे स्टार्ट हला अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ काका कालेलकर सबमिटेड रिपोर्ट इन 1955 he prepared a list of around 2400 backward castes right out 837 most backward right so but this kaka kalelkar tankar jo report taku it has been rejected by the Nehru government then second backward class commission was established in 1st January 1979 bp mandal was the chairman and recommended reservation of 70%. Now submitted report on December 1980 included Hindus plus non-Hindus backward class consist of 52% of the total population se kale total population betik asali tankara lagbag 52% of the total population se man hochandi backward classes and this is what we call Mandal commission so according to him he recommended 27% of the reservation as SCs and reservation bar said not extend 50% in any case because it is already there कि रिजर्वेशन 50% अधिक हेई परिबोनी ता पूर्वरु एसटी को दिया जायछि 7.5% 7.5% एसटी एससी को दिया जायछि 15% दीटांग मिसी केते हिजो 22.5 करेक्ट 50 रु जदी मु 22.5 सब्ट्रैक्ट करी मते मिलिबो केते 27.5 ट्रू देन मैक्सिमम परसेंटेज ओबीसी को देबे केते 27% मैक्सिमम 27.5 होबा कथा बट 50% को अधिक हेई परिबोनी तनो सेमान रखिले 27% एनी डाउट Kaka Kalelkar out of the Mandal commission asila then you know these two backward class commission this is not backward caste commission this is backward class commission these were created for NCBC NCSC NCST jodi kali question asila then you should go for NCBC ki NCBC pai emane oda background tiyari korthile correct no other backward class pai emane background tiyari korthile Kalelkar out Mandal commission is that clear any doubt okay maybe I won't take a reservation now because that is a governance topic but this is interesting actually okay so why I want to cover it is because I am planning to set something related to economics to thire ki weaker section aseo to okay weaker section by economical weaker section katha bi tike dekhi daba to au tike thila but टफ लागुथो ना एगुडा बर्तन टाइम रे दरकार नै मत लागे बट इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन कथा कोन जेतला आसीबो ना जस्ट खाली तुमको हिंट दे दोची कि जेतले तमे कहउछ 50% ठीक अछि कि 50% तमे फिक्स कर देला भाई एसटी 7.5 एससी 15% ओबीसी 27% से माने हे गले 49.5% दैट मींस लेस देन 50% एक्सेप्टेबल नाउ इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन आसले से कहले भाई तमे ए सब जेतले यात्रा करतलो ना एगुडा तो ठीक अछि ओबीसी कथा तमे कहले कि कॉन्स्टिट्यूशन रे अछि किछि किछि जगह रे वीकर सेक्शन लिखाइ छी कोठी अदर बैकवर्ड क्लासेस लिखाइ छी जोथरे कि तमे ताकू डिराइव करलो कि भाई दिस इज ओबीसी व्हाट अबाउट अस कथा होची जेतले तमे डिसाइड करथलो सेतले त आमे थिलु ही नाही तमे जेतले डिसाइड करथलो ए जो 50% ये 50% इक्वल टू एससी ए 50% भितर एसटी आसीबे ए 50% भितर ओबीसी आसीबे मु सेतले थिली ही नाही सेमानकर पॉइंट होची सेठी कि ईडब्ल्यूएस तो कांसेप्ट ही नथिला इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन मु ताको केमति बुझा जाय फॉर एग्जांपल गोटे बापांकर तीनटा पुआ अछि राइट तीनटा रूम अछि
ठीक अछि तीनटा रूम अछि गोटे बड़ रूम दिस इज ए बिगर वन आई एम पुटिंग एज फर्स्ट एपट साइड टा सेकंड माने ताटू टिके छोट रूम एटा होछि थर्ड दीटा पुओ बापर घरे ही अछथि थर्ड पुओ जे से वर्तमान भाबिनो पुणे रे अछि या फिर मुंबई रे अछि या फिर गुजरात रे अछि ठीक अछि लेट्स सपोज गुजरात रे अछि वर्तमान मते कुह कि जेतेले बापा कहबे थर्ड पुओ जे गुजरात रे अछि जदि बापा कहबे कि घर को डिवाइड करिया पई ए थर्ड घरटा होछि सबटु छोट घर ए थर्ड घर को किए नबो के नेबे कि फास्ट दीटा को पुओ भितर से माने थर्ड घर को चूज करिवे कि करिवेनी तो वर्तमान जेतेले थर्ड पुओ आसीबो से कहबे कि भाई तमे आउ थरे करो काहेकि जेतेले मु नथिली तमे सेतेबेले डिवाइड करथिलो तो ए 50% कांसेप्ट सेतिकी बेले थिला जेतेले केवल एससी एसटी ओबीसी थिले सेतेले ईडब्ल्यूएस थिला ही नाही पिक्चर रे जदि ईडब्ल्यूएस थांदा सेतेले जणा पड़िथांदा कि ताकू भी किछि पोर्शन मिली जाय थांदा बुझेउ ना बुझेउनी तेणु तापर से माने कहले कि अच्छा ठीक अछि ईडब्ल्यूएस को आमे आनिबा ताकू मु डिटेल रे कहिबी ईडब्ल्यूएस को आमे आनिबा बट ताकू आइ 50 भीतर दबानी रेस्ट जो 50 देले जनरल ग्रुप रे जनरल रु उठेबा ईडब्ल्यूएस नॉट कि एमान को भितरु एमाने बाय डिफॉल्ट एमान को आमे 50% रे दे देलु कि जनरल रे जहारो ईडब्ल्यूएस अछि तो अगेन सेतिर वर्ड आसीबो क्रीमी लेयर नॉन क्रीमी लेयर दिस क्रीमी लेयर इज रिलेटेड टू डाटा सो दिस डाटा तो तार गोटे फार्मूला अछि एबीसी बोली तीनटा कंपोनेंट गोटे ट्रायंगुलर फार्मूला ओके let me show that yes this is what we call ए तीनटा को चेक करिया पड़े गोटे होची एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी गोटे होची इनएडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन एंड इट हैज टू बी बैकवर्ड क्लास जदी ए तीनटा को जदी मिसी किथिबो दैट इज व्हाट वी कॉल द ट्रायंगल काहेकि ना बिकॉज़ गोटे एन नागराज केस आस्तिला राइट एम नागराज वर्सेस यूनियन यूनिवर्सिटी 2006 रे की रिजर्वेशन ऑन दिस 5 टर्म्स को टर्म ना इट हैज टू हैव ए सीलिंग लिमिट ऑफ 50% concept of creamy layer concept of creamy layer this creamy layer represents data क्रीमी लेयर माने कोन तुमको गोटे डाटा दरकार देन काली जेतले तमे कहबा सुप्रीम कोर्ट रो जजमेंट आसिला ना कि भाई वी आल्सो वांट क्रीमी लेयर इन एससी एंड एसटी states they will define what will be the creamy layer now the question is से क्रीमी लेयर डिफाइन हला अलगु तांको सहित पूणी अनटचेबिलिटी डिस्क्रिमिनेशन वाला पॉलिसी पूणी न होई जाऊ बुझियो ना बुझियो कि एससी एसटी को सहित हम स्टार्टिंग रु कम पढिले कि तांको आम लोक ही डिस्क्रिमिनेट करके रखिथिले काली जदी तांको हठात ना तमे जाई कि पैसा कथा कहबो कि भाई तमे केते पैसा कमाउछो जदी से माने कहले कि 8 लाख ए 8 लाख कोडा कमाउतो मते 4 लाख तमे 12 लाख कमाउछो देन तांको सहित पूणी आ इनजस्टिस न होई जाऊ बुझियो ना तो सेटा को प्रोटेक्ट करियार अछि जोथि पय कि सुप्रीम कोर्ट मना करथला बट एबे जेहेतु अगेन मु कहली ना द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए लिविंग डॉक्यूमेंट जदी बर्तन सुप्रीम कोर्ट को फील होछि नहीं the situation has been changed they have sufficiently गोटे सम टाइम वाला जो रिजर्वेशन पॉलिसी थिला बाबा साहेब अंबेडकर कर कि आमे दोचु कोथि पय जो हिस्टोरिकल रॉन्ग हेछि टू रिस्टोर द ह्यूमन डिग्निटी आमे चाहू रिजर्वेशन पॉलिसी आने पे ताकि जो हिस्टोरिकल रॉन्ग हेछि सेटा को आमे कोन करि परिबु करेक्ट करि परिबु हां कि नहीं तो एटलीस्ट जदी बर्तन सुप्रीम कोर्ट हिस्टोरिकल रॉन्ग टा करेक्ट हेछि कि ना एटा की जजमेंट दबो सुप्रीम कोर्ट दबो जदी सुप्रीम कोर्ट को लागु छि कि भाई दे आर नाउ एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड देन देयर माइट बी सिचुएशन ऑफ क्रीमी लेयर आगुरु हो नथिला एबे सिचुएशन में से माने कहउछथि कि स्टेट निज निज हिसाब रे से माने डिफाइन करबे व्हाट वुड बी द क्रीमी लेयर सो मे बी दैट वी विल डिस्कस सम टाइम एल्स बट एटलीस्ट प्रीलिम पर्सपेक्टिव रु जदी मु कहबी आमे कोन कोन कवर कले एनएचआरसी एनसीएससी एनसीएसटी एनसीबीसी एटलीस्ट आर जति की पॉइंट थिला फॉर एग्जांपल एनएचआरसी तो ताको आमे कहले कोठू ना यूनाइटेड नेशन आसिला जेतले वर्ल्ड वार परे हिटलर कहिदला आई डोंट केयर अबाउट ह्यूमन राइट देन यूनाइटेड नेशन से माने फर्स्ट डिक्लेरेशन कले यूनाइटेड यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन राइट्स 1948 रे देन नेशन माने सेटा को एक्सेप्ट कले जेहेतु नेशन माने एक्सेप्ट कले देन आम पाखरे भी आर्टिकल 51 अछि कि जदी आमे किछि गोटे इंटरनेशनली कोन गोटे एक्सेप्ट करजे तो सेटा को हमहु मानियो पड़ियो इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी राइट तो जेहेतु 51 रे अछि स्टेट चाहिले से कोन करबो लॉ तयारी करबो देन टू प्रोटेक्ट द स्टेट्स not to do any violation against any individual human right violations then आम गोटे फोर्थ ब्रांच इंस्टीट्यूशन करियार थिला जोटा को आमे कहले ह्यूमन राइट कमिशन तो 1991 रे हमको जाना पड़ला कि भाई पेरिस प्रिंसिपल रे डिक्लेयर करा होची कि जदी तमे गोटे स्टेट तयारी करछि एंड से जो जिनसटा तयारी हो जो इंस्टीट्यूशन तयारी हो से स्टेट को ही चेक करिवो दैट मींस आर सफिशिएंट प्रोटेक्शन हे दरकार जोटा कि 1991 रे पेरिस प्रिंसिपल रे से माने कहले कि भाई ताको तमे आइदर स्टैट्यूटरी स्टेटस दियो या फिर ताको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दियो देन इंडिया 1993 रे प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ने केसिला जोथरे कि एनएचआरसी आउ एसएचआरसी बनिला नेशनल ह्यूमन राइट कमिशन एंड स्टेट ह्यूमन राइट कमिशन मेंबर केते जण ना 1 5 7 राइट देन किए से मानको अपॉइंटमेंट दिए ना प्रेसिडेंट दिए ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट ना ऑन द बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन ऑफ ए कमिटी तो कमिटी रे किए थिबो ना प्राइम मिनिस्टर थिबो लीडर ऑफ स्पीकर लीडर ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा
प्लस होम मिनिस्टर सेपट आउ किए थिबो ना राज्यसभा रो डेप्यूटी चेयरमैन लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम राज्यसभा एंड लीडर ऑफ अपोजिशन फ्रॉम लोकसभा एंड सेठी गोटे मन रखिथो लार्जेस्ट लीडर ऑफ अपोजिशन रो लार्जेस्ट जोटा मेंबर अछि कहीं ना गोटे सिचुएशन जो सिचुएशन रे कि लार्जेस्ट अपोजिशन थिले ही नाही 1/10 रहिबा कथा सेति भी नाहांती तो सेति में से माने कोन कले किछि किछि पोस्ट सिलेक्ट ही हे पारलेनी सेमानकु इलेक्ट माने सेमानकु अपॉइंट ही करे ही पारलानी बिकॉज़ सेठी केवल लिखा है लीडर ऑफ अपोजिशन एंड लीडर पाइन दरकार मिनिमम 1/10 रिप्रेजेंटेशन लोकसभा रो जति 545 को मिनिमम 54-55 टा लोक तो थिबा दरकार अपोजिशन रो लीडर होआ पे तापर से माने कहले कि लीडर ऑफ लार्जेस्ट पार्टी इन द अपोजिशन कि हां जदी तमरो 30 टा भी रे भी तमे सबटु लार्जेस्ट अछ अपोजिशन में देन तारे तांको भितरु जे लीडर होबा सी ही परियो बुझियला तो ये सब कांसेप्ट हमें देखिला देन एनसीएससी 338 वाला 65th वाला कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट देन एनसीएसटी जोटा कि हमें कहले 89th वाला 2003 रो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एनसीएससी रो एनसीएसटी केमते हला एंड एनसीबीसी पई जो चंपकम दोराई राजन वाला केस तार को आर्टिकल गुड़ा इन्वॉल्व थिला मु कहले आर्टिकल 15 क्लॉज 1 आर्टिकल 16 क्लॉज 2 आर्टिकल 29 क्लॉज 2 आर्टिकल 46 तो आर्टिकल 46 16 क्लॉज 2 एंड 29 क्लॉज 2 these were morely related to what is 29 clause 2 related to education right जो रे की डिनाई तमे करि परिबोनी 46 कहउचे कि नै स्टेट चाहिले करि परिबो करेक्ट देन से माने नै कि आसिले 1953 रे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गोटे करेक्ट तो जोटा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रे से माने कोन कहले कि भाई आर्टिकल 15 क्लॉज 4 पुरे देले जेतले आर्टिकल 15 क्लॉज 4 1953 1951 सेही वर्ष ही से माने कहले आर्टिकल 15 क्लॉज 4 रे से माने ट्राई करले फंडामेंटल राइट टाको वीकेनिंग कर दबे बिकॉज़ ताको तो हटै दे परिबोनु सिमिलरली सेम जिंस हेतिला केउथरे ना प्रॉपर्टी राइट को जेतले रिमूवल करा हेतिला 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए बी सी डी ई एफ जेतले एफ को हटै थिले सेतिक बेले भी से माने ट्राई करथिले कोन वीकेनिंग करिया पे हटै दे परिबेनि तुरंत ताको सफिशिएंटली वीकेनिंग कर दियो जेतले कि तारा महत्व ही रहबोनी तो ताको से माने 31 ए 31 बी 31 सी एथरे ऐड करी करी देन ताको 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ को उठे कि नेकी 300 रे पके देले बुझियला ना बुझियला नि ओके Yes, sir. ओके चलो एनी डाउट